Welcome to Vamsi's Golden Series for IAS. If you can believe, you can start, but if you can understand, you can achieve. So, environment is very important module. I am dividing environment into 5 subparts: introduction, wetlands, biodiversity, climate, environmental laws, movements, and current updates. So, this is wetlands summary. So, wetlands I am dividing again into introduction to wetlands, coral reefs, and mangroves. First, let us start with introduction to wetlands. What is definition of wetland? Though it is not required for prelims, just एक बार देख लेते हैं. Marsh, fen, peatland or water, either natural or artificial, either permanent or temporary with water, that could be static or flowing water. It could be fresh water, brackish water or salt water, including marine waters, but in that case the depth at low tide should not exceed 6 meters. This is the definition of wetland given at the time of Ramsar Convention. What are various types of wetlands? If you talk of inland wetlands, some examples are lakes, ponds, waterlogged swamps, marshes, reservoirs, etc. And if you take coastal wetlands, estuaries, lagoon, creek, bay, gulf, mangroves, coral reefs, etc. These are some examples. Just एक बार mind में रखिए वे क्या है, automatically आपको समझ में आ जाएगा. Don't get tense at this point of time. What are benefits of wetlands? They can control pollution because they absorb pollution. Flood control, home for species, etc. So what are threats? Climate change, waste disposal, construction of dams, illegal activities, etc. What are mitigation measures? Creating awareness, survey and demarcation, removal of encroachments, etc. What is eutrophication? When oversupply of nutrients happen to a nearby water body, then explosive growth of algae and plants occur. When they die, they consume oxygen in decomposition process. Then lack of oxygen in the water body, that is called hypoxia. In that situation, aquatic life may come to an end. So death of aquatic life happen. This process is called eutrophication. So oversupply of nutrients, explosive growth of algae and plants. When they die, consume oxygen, create hypoxia. Then aquatic life will come to an end. Next, we have seen Ramsar Convention. This is more important. What is Ramsar Convention? It is an intergovernmental treaty. So, national action होगा and international level पे cooperation होगा. Conservation and wide use of wetlands is the main idea. Of course, and their resources also. So, Ramsar sites, total 169 contracting parties are there. No need to remember. And total Ramsar sites, also called wetlands of international importance. They are 2231 in number at present. No need to remember, but एक idea होना चाहिए, more than 2000. India से 26 sites are there. Then under 3 pillars of this Ramsar Convention, first pillar is wide use of wetlands. Second is designation of suitable wetlands. Third is in case of transboundary wetlands, there should be international cooperation. And conference of parties, they keep meeting once in every 3 years. No need to remember. 12th COP, recently they met in 2015 in Uruguay. No need to remember. World Wetland Day is celebrated on 2nd February. याद रख लेना. 2000 हर wetland day पे एक theme होता है. 2016 का theme है wetland for our future sustainable livelihoods. And 2017 का थीम है वेटलैंड्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. एटलीस्ट 17 का थीम याद रखे छोटी एग्जाम्स के लिए. वेटलैंड्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. Then we have seen Montrex record. What is Montrex record? These are nothing but wetlands under Ramsar list only. But when ecological character had changed or changing or about to change, in that case these wetlands will be put under Montrex record. So this concept was adopted in 1990 COP, no need to remember. And there are 51 sites in the world in this record. Approximate idea रखे, exactly मगअप करने की जरूरत नहीं. And India से 2 है, they are Kealadio National Park in Rajasthan and Loktak Lake in Manipur. What is Wetland International? Wetland International एक NGO है. So obviously NGO होगा तो it works at field level with local people to develop and mobilize knowledge.
and it was established in 1995 and its headquarters are Netherlands. No need to mug up. If you find that I am going fast, pause करके एक बार देखिए. Since it is summary lecture, that's why I am going fast. Next, what is National Wetland Conservation Program? This is not important for prelims. Just एक बार देखेंगे. So what is it? It was started by Government of India along with in collaboration with the state governments in 1985-86, and according to this, 115 wetlands are identified till now for the conservation. What is the aim of this? It is conservation and wise use of wetlands. What are the objectives? First is to make policy guidelines. Second is to take intensive conservation measures. Third is to monitor the implementation of the program, and finally to prepare an inventory of wetlands. Don't mug up. Just एक बार देख के भूल जाइए. Leave it. Don't take too seriously. Not very important. Next, this is very important. So wetlands, 4.7% of geographical area of India are wetlands, including paddy fields. It is 18%, because paddy fields are also come under wetlands. Total geographical area of coastal wetlands is more than that of inland wetlands. Gujarat has highest proportion of area as wetlands, that is 17.5%. Even in the total India, maximum area of wetlands is in Gujarat because of Gulf of Kambat and Gulf of Kutch. Mizoram 0.66%, which is minimum. In case of UTs, Lakshadweep is highest, 96%, because entire Lakshadweep are coral reefs. Chandigarh minimum, that is only 3%. These are important facts. Next, where are important wetlands are located? Ular Lake in J&K. Jhelum River passes through this. Somorri in J&K. Out of high altitude lakes entirely in India, it is the largest. It is at a height of 4500 meters. But no need to remember that figure. Pong Dam, also called Maharana Pratap Sagar in Himachal Pradesh. It is constructed, it was built on Byas River. Important. Then Harike Lake in Punjab. It is at the confluence of Satluj and Byas rivers. Then we have Keladio National Park in Rajasthan. It is under Montex record. We have Sambar Lake in Rajasthan. It is the largest inland lake. It is a saline lake known for salt production. We have Loktak Lake in Manipur. It is unique for its floating vegetation. Inside this, there is a national park called Kibul Lamjau National Park, and it is into Montex record, and Sangai deer you find in this lake, in this Kibul Lamjau National Park. In south, we have Bhitarkanika in Odisha. It is second largest mangrove. Brahmani and Baitarni river flows through this forest, and it is known for saltwater crocodiles, olive ridley turtles and gharial. We have Chilka Lake in Odisha. It is the largest lake, whether it is inland or coastal. Overall, it is largest, but it is a coastal lake and it is a saltwater lake, and it is known for Irrawaddy dolphins. Then we have Kolleru Lake in AP. It is largest freshwater lake. We have Point Calimar or Cape Calimar in Tamil Nadu. It is in Kaveri Delta. There is a Chola lighthouse in at this place, and the forest around this lake is called Vedaranyam forest. Then we have Vembanad Coal Lake in Kerala. It is the longest lake, and Kochi port was built on Wellington Island. That island was between Vembanad Lake and Arabian Sea, and National Waterway 3 passes through this lake. And we have Ashtamudi wetland in Kerala. National Waterway 3 passes through this wetland also, and Kallad River drains into this lake, and it forms an estuary with the Arabian Sea at a place called Neendkar. So that is called Neendkar estuary. These are important wetlands. You have to remember. If you see some less important wetlands like Surinsar, Mansar in Jammu Kashmir. Then we have Anchar and Dal lakes in Srinagar, Jammu Kashmir. Then we have Chandratal in Himachal Pradesh, Renuka wetland in Himachal Pradesh, and similarly we have Rudrasagar in Tripura. We have Nakki Lake in Rajasthan, जिसमें गांधी जी का ashes were इसमें मिलाया है. Then we have Nal Sarovar in Gujarat. Then we have Sastamkotta in Kerala and Pulikat in Andhra Pradesh and Tamil Nadu. 95% of it is in Andhra Pradesh. 5% of this lake falls in the Tamil Nadu also, but you do not require all that. And you know, this is second largest lake after Chilka, which is also saltwater lake. And you know, Sriharikota, the rocket launch station, which is on the island between Bay of Bengal and Pulikat Lake. Then we have seen coral reefs. What are coral reefs? Calcium carbonate structures secreted by corals. What are corals? Polyps
that live in clusters. What is a polyp? Which is a tiny marine animal. These are also called rainforests of sea because they occupy less than 0.1% of the area of sea surface, but are home to 25%, more than 25% of marine life. That's why the biodiversity is extremely high in coral reefs. They are mainly found in tropics between 30 degree north and 30 degree south. अगर क्वेश्चन आता है they are only found in tropics, गलत है. It's not only found, but mainly most of them are found in tropics. So Pacific and Australia almost 40% and Southeast Asia 30+%. So these are two areas where you find most of the coral reefs. Then different types. We have fringing reefs. That means they are attached to a shore. Barrier reefs, they are separated from shore by a small channel or lagoon. Then we have atolls. There will be no mainland. They are mostly circular without any central island, like Lakshadweeps. All Lakshadweeps are atolls. What are functions of coral reefs? Ecosystem services, biodiversity, habitat, important habitat, shoreline protection, tourism, source of medicine, like that. You can say even more. So just understand, function means benefit. Any such positive action you can take. Extreme positive nahi, like the whole world poverty will be removed. ऐसा तो नहीं है, मतलब generally positive common sense से आप choose कर सकता है. If you find me going fast and if you do not understand, watch the whole video which are uploaded also. Then what are threats? Global warming. Because coral reefs can exist at a range of temperature, generally 25 degrees, 27 degrees centigrade range. So global warming से अगर sea water temperature increase होता है, then you know coral reefs cannot survive. So global warming is a threat. Similarly, climate change, obviously one and the same. So unsustainable fishing, land-based pollution, bioerosion. Bioerosion means it's a natural process. Biological agents के वजह से the coral reefs can be eroded. Even if you want to say like acid rain, that kind of things also you can add. Coral bleaching क्या होता है? Corals और algae के बीच में symbiotic relationship होता है. Symbiotic relation means it is a positive relation. Both the species will get benefit. Like algae will get shelter, whereas corals will get attraction and color. If this is disturbed, for example, sea water temperature increases, then algae cannot survive. Then disturbed algae coral symbiotic relationship, then algae start leaving. Once algae leaves, corals loses color and attraction. When they lose attraction, automatically, so they lose their importance. So what are main causes? Change in temperature, sea salinity, these are major causes. Acid rain and land-based pollution also you can say in minor level. Okay. So this is all about coral reefs. Where are important coral reefs? Andaman and Nicobar में है, they are fringing reefs. Similarly, Gulf of Mannar में है, they are fringing reefs. Similarly, Gulf of Kutch में है, they are also fringing reefs. We have Lakshadweep में भी है, they are atolls. And small coral reefs are there in Maharashtra, Tarkali and Vijayadurg. Similarly, in Karnataka, Netrani Island. Just एक बार mind में रखिए, no need to mug up these three. Tarkali, Vijayadurg in Maharashtra, Netrani Island in Karnataka. So these are all the places where you find coral reefs. If you observe this, you don't find coral reefs in this area. So on the eastern coast from Bengal till Chennai, you don't find coral reefs because so many east flowing rivers, they carry fresh water. Because of the fresh water, coral reefs cannot be formed there. Because to form coral reefs, a kind of range of sea salinity is required. So which is missing on this side. Then we have seen mangroves. What are mangroves? Small trees that grow in coastal saline or brackish water. कोई काम कर नहीं, but they are salt tolerant trees, also called halophytes. Just keep the word halophytes in your mind. What are important characteristics? They are adapted to low oxygen. Their roots limit the salt intake. Similarly, their leaves limit the water loss. Similarly, increasing survival of offspring. That means the seeds germinate when they are attached to the tree itself. When they fall down, they are capable of doing their own photosynthesis and can make their own food. Otherwise, they cannot survive. You can understand because tides के साथ वे चले जाएंगे अगर if they are not capable. So this is what is increasing of survival of offspring. So these are characteristics of mangrove forests.
That's why they can survive in the harsh climate of coastal region. Now, what are functions or benefits of mangroves? This is very important. Shoreline protection. The reason is that they have extensive roots, mangrove forests, and they will not get uprooted. Even tsunami wave, itna force se aata bhi hai, though the roots will not get uprooted. That's why they can protect the shoreline. That's why even there is a case study in Tamil Nadu when 2004 tsunami time pe, there was a village in near Pichavaram because that village is surrounded by mangroves. That's why the minimum damage happened to that village. Similarly, breeding grounds. They are very important breeding grounds. That's why Bhitarkanika mangroves are well known for olive ridley turtles and all. And timber. It is just एक idea के लिए mind में रखे, not very important. Next, what is MFF? It is not very important. Mangroves for the future. So mangroves for future is a partner-led initiative. बस इतना mind में रखे. It's not any intergovernmental treaty or something. It is partner-led initiative. Who are partners? Maybe NGOs or whoever it is. So it is a partner-led initiative. It is coordinated by IUCN. You know IUCN, International Union for Conservation of Nature, which is also an NGO. इसके बारे में हम 5th part में बात करेंगे. आगे आएगा, don't worry. So IUCN coordinate करता है इसको, and it is operating in 11 countries at present. No need to remember the number, but इतना माइंड में रखिए. Mostly they are working in, it is working in Southeast Asia and South Asia, and India में भी ये काम कर रहा है. So बस ये कोई काम का नहीं, just एक idea के लिए. Just mangroves for future ऐसा नहीं, आपने सुना ही नहीं, just सुन लिया, but no need to go deep into this. Okay? Then where are important mangroves in India? Sundarbans, which is in fact largest in the world, not only in India, largest mangrove forest in the world. Then Bengal mein hai, of course in Bangladesh also. Then we have Bhitarkanika, which is second largest mangrove in India. यहाँ ब्राह्मणी बैतरनी रिवर्स जाता है इस मैंग्रोव के साथ, मैंग्रोव के थ्रू, एंड इट इज नोन फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, इवन घरियाल. गोदावरी कृष्णा इन आंध्र प्रदेश, गोदावरी डेल्टा एंड कृष्णा डेल्टा. वी हैव पिचवरम मैंग्रोव्स, गल्फ ऑफ मन्नार मैंग्रोव्स इन तमिलनाडु. यहाँ कोरल रीफ्स भी है, मैंग्रोव्स भी है. सिमिलरली वी हैव बारातंग इन अंडमान, बिटवीन साउथ अंडमान एंड मिडिल अंडमान. We have Gulf of Kutch in Gujarat. यहाँ भी mangroves भी है, corals भी है. And small mangroves like Ratnagiri in Maharashtra, Goa में Chorav Island, similarly Kundapur in Karnataka, Vembanad in Kerala. These are small mangrove forests. We don't have any mangroves in Lakshadweep. Lakshadweep are completely corals. Don't get confused. And generally mangroves are found near tropics. 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ. अगर ऐसा दिया होता है तो कंप्लीटली दे आर ओनली फाउंड इन ट्रॉपिक्स, गलत है. दे आर फाउंड मोस्टली इन ट्रॉपिक्स, सही है. ऐसा भी दे सकता है, या मैंग्रोव्स, मोर मैंग्रोव्स आर फाउंड एट हायर लैटिट्यूड्स. ऐसा दिया तो भी गलत है, बिकॉज 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ मीन्स लोअर लैटिट्यूड्स. एशिया में सबसे ज्यादा है 42%, एंड इन इंडिया मैंग्रोव कवरेज 3%. ये भी याद रखिए, क्योंकि ऐसा दे सकता है इंडिया इज ए होम टू, इंडिया हैज मोर देन 10% मैंग्रोव कवर ऑफ द वर्ल्ड. गलत है, 3% ओनली. वेस्ट बंगाल में स्टेट वाइज बात करें, वेस्ट बंगाल हैज हाईएस्ट इन इंडिया 2000. नो नीड टू रिमेंबर द एरिया साइज, बट वेस्ट बंगाल हाईएस्ट, देन फॉलोड बाय गुजरात, नॉट ओडिशा. इंडिपेंडेंट मैंग्रोव्स की बात करेंगे, भितरकनिका इज सेकंड लार्जेस्ट, बट स्टेट वाइज बात करेंगे गुजरात में ज्यादा है, बिकॉज गुजरात में सो मेनी मैंग्रोव्स आर देयर, नॉट वन, they are not consolidated at one place, but they are spread across the coast. So Gujarat is the second largest. No need to know more, but इतना याद रखिए, West Bengal, Gujarat, then Andaman, AP, Andhra Pradesh, then Odisha, like that. Odisha में सिर्फ भितरकनिका है. Second largest mangrove in India पूछेगा independently, that is भितरकनिका. Second largest, the state which has second largest mangrove cover in India पूछेगा तो Gujarat. Got it? So this is all what you have to know in this. This is the summary of Day 1 environment. Thank you for watching. Welcome all of you. So I am dividing Indian economy into 6 parts. First part is monetary policy and fiscal policy. Second part is external economy. Third is evolution of banking, insurance, etc. Fourth, sectors of economy.
Fifth, Indian economy, evolution, planning, reforms, etc. And final, survey, budget and current updates. So this is summary of first part, that is monetary policy and fiscal policy. So monetary policy is controlled by RBI in India and fiscal policy is controlled by Government of India. So this is first point you should know, very basic thing, you must know it already. What are the objectives of these policies? The main objective is economic growth, economic development chahiye, but at the same time price stability, inflation should be controlled. कोई काम का नहीं, जस्ट वैसा बता रहा हूं, you should know. What are the tools of monetary policy? There are quantitative tools as well as qualitative tools. First, let me list down. Quantitative tools are cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, policy rate or repo rate, bank rate, marginal standing facility rate, open market operations. And qualitative tools are loan to value ratio, consumer credit control, rationing, moral suasion and direct action. You can pause it and watch if you do not know it. Otherwise, it is a summary lecture. That's why I'm going little fast, because we have already discussed this in the original video. So these qualitative tools are also called as direct tools or selective tools. Why? You will come to know in a while. And these quantitative tools are called indirect tools. Let's start with quantitative tools. CRR, SLR. CRR means cash reserve ratio, SLR means statutory liquidity ratio. You know, banks have NDTL, net demand and time liabilities. Out of that, certain percentage must be reserved in the form of cash. At present it is 4%, it may vary a little, maybe 0.5% आगे पीछे हो सकता है. तो this percentage of NDTL must be kept in the form of cash with RBI, that is called CRR. You already know that. If you do not know that, watch the main video. SLR, statutory liquidity ratio, certain percentage, maybe 21-22% of NDTL must be kept not exactly in the form of cash, in the form of government securities or gold, like that. It has to be kept with the bank itself. So this is SLR. You need not mug up what is CRR and SLR, but you understand how it changes. Suppose if there is an increase in SLR or CRR, that means more money is kept in reserve. Automatically in that case, banks will be left with less money. So that is called tight or dear money policy. That means if CRR or SLR increases, then we can say RBI is following a tight money policy or dear money policy, also called contractionary monetary policy. That means the money in circulation decreases. If money in circulation decreases, interest rate may increase. We cannot say exactly it will immediately increase. The chance, ideally बात करेंगे तो it may increase. In that case, if interest rate increases and money circulation decreases, inflation can be controlled. So, if the RBI wants to control the inflation, what it has to do? It has to increase CRR or SLR. In that case, that is called tight or dear money policy. Similarly, to fight with deflation, CRR and SLR can be reduced. Then less in reserve, so more money will be left with the banks. Hence, interest rate may decrease and money circulation in the economy may increase. In that case, deflation can be controlled. Loan lena आसान हो जाएगी. If you are not getting, pause it for a moment and understand, or watch the main video. Then bank rate. If a bank wants to take a long-term loan from RBI, in that case no collateral is required, then the rate of interest that the bank has to pay to the RBI is called bank rate. So RBI will decide this. So if bank rate is more, that means it is difficult for bank to take loan. That means difficult in the sense more costly. So bank is paying more interest. Then automatically the interest rate in the economy also increases. That means this is also called tight or dear money policy. That means RBI doesn't want to make loans easy. So this is called tight or dear money policy. Again, inflation can be controlled. Liquidity adjustment facility. For short time
short term requirements, banks may need money in case of short duration, then they can take it from RBI with an option called repo rate. That means they can sell their securities with an option of repurchase. That means they will buy it back with something more. So that is called repo rate for short term loans. In that case, collateral is required, that is nothing but securities. Again, RBI increases repo rate, that is also called policy rate. If RBI increases policy rate, that means what happens? Again, RBI wants to follow tight or dear money policy. That means RBI doesn't want to give loan easily, so it wants to make it costly. So then automatically the money circulation decreases and all, may decrease. So tight money policy means, you understand. Automatically what is reverse of it? Loose money policy. Suppose CRR or SLR is decreased, that means loose money policy. Bank rate is decreased, loose money policy. Policy rate is decreased, loose money policy. MSF means marginal standing facility rate. MSF rate. If a bank wants to take short term loan, बट दे आर आउट ऑफ सिक्योरिटीज, बैंक के पास सिक्योरिटीज नहीं है. इफ सिक्योरिटीज होगा तो रेपो रेट के अंडर ले सकता है लोन, बट सिक्योरिटीज भी खत्म हो गया, बट स्टिल बैंक वांट्स टू टेक लोन. देन व्हाट हैपन? टू सर्टेन एक्सटेंट इट कैन यूज द सिक्योरिटीज ऑफ SLR and can take loan, but not the whole securities of SLR cannot be used. There is a limit, like I think at present it is 1% of NDTL. It may vary also, we need not remember what exactly, but certain लिमिट तक, वेरी मिनिमम लिमिट, लाइक 1% इज नथिंग. सो उतना तक वे SLR का कोटा का सिक्योरिटीज रख के लोन ले सकता है शॉर्ट टर्म के लिए. देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट द बैंक नीड टू पे इज कॉल्ड MSF रेट, विच इज जनरली मोर. RBI does not fix MSF rate, bank rate and all. It fixes only policy rate. Automatically bank rate will be little more or less short, MSF rate will be little high. They are all depending on this. No need to dig deep into this, itna bahut hai. Then open market operations. Sometimes RBI can directly deal with people by selling or buying securities. Directly means ऐसा नहीं RBI बाहर आके मार्केट में बेचेगा. There are primary dealers and all that we will see in some other topic. Open market operation means RBI can directly sell or purchase securities from public. If RBI is selling securities, that means RBI is giving securities to people and taking money from people. In that case, the money with people is going to RBI. That means RBI is taking the money from people, then the circulation decreases. Money circulation decreases. Then again inflation can be controlled. That means to control inflation, what RBI should do? Should sell securities. Because तभी आरबीआई के पास पैसा आएगा. अगर आरबीआई के पास पैसा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सर्कुलेशन में मनी कम हो रहा है. सिमिलरली अगर डिफ्लेशन चल रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है कुछ खरीदने के लिए, आरबीआई वांट्स पीपल टू परचेज, ये परचेजिंग पावर इंक्रीज करवाना चाहता है आरबीआई. इन दैट केस व्हाट आरबीआई कैन डू? आरबीआई कैन purchase the securities. So RBI purchase back the securities from people and give money to people. That means money will go from RBI to people. Again money circulation increases and hence they can purchase. So these are all tools. वे सिर्फ आपको कॉमन सेंस से समझना है. डोंट मग अप. आप थोड़ा पाज करके इसको देख के समझ लीजिए. इफ यू स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड, गो टू द मेन वीडियो एंड वॉच इट केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड. Then we have seen qualitative tools. First one is margin requirement or loan to value ratio. Loan to value ratio or margin requirement means, suppose I want to take a loan by mortgaging my house. Then RBI can decide out of the value of the house up to what percentage the loan can be given. Suppose the value of the house is 1 CR, RBI can tell banks give only up to 60% of the value of that. That means I can get maximum 60 lakh loan only. But RBI wants to make loans easy, then it can say 80%. Then I will get 80 lakh loan. So easy. So by this way it can be changed. So loan to value ratio or margin requirement. Similarly, credit control. RBI can decide how much credit to give, in what down payment should be and how many installments. अगर RBI चाहता है लोन क्रेडिट देना आसान करना चाहता है, then automatically down payment कम करे and installments easy करे, so more people will buy it. Suppose ऑटोमोबाइल का
सेल बढ़ाना चाहता है आरबीआई, इट वांट्स टू हेल्प ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, देन व्हाट इट कैन डू, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर डाउन पेमेंट, जीरो डाउन पेमेंट पे ले जाओ, और इंस्टॉलमेंट्स भी बहुत लंबे इंस्टॉलमेंट्स दे दो, छोटी छोटी पेमेंट करके, देन मोर पीपल हैव विल गेट द कैपेबिलिटी टू बाई इट, सो द सेल्स कैन बी इंक्रीज। सिमिलरली अगर कम करना चाहता है तो इसको उल्टा कर सकता है। That's why these are called selective tools, because वे सेक्टर बाय सेक्टर डिसाइड कर सकता है कौन सी सेक्टर में इजी करना है, कौन सी सेक्टर में डिफिकल्ट करना वगैरह। नेक्स्ट इज रेशनिंग और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल। रेशनिंग मींस इस सेक्टर में इतना परसेंट से ज्यादा लोन्स मत दे दो, out of the total loans disbursed by a bank you cannot give more than 20% of loans to this sector, ऐसा करके रेशनिंग अपर लिमिट लगा सकता है आरबीआई। सिमिलरली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वे भी बोल सकता है इस सेक्टर में इफ आरबीआई फील्स दैट एनी पर्टिकुलर सेक्टर इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड देन इट कैन पुट दैट मिनिमम इतना परसेंट लोन इस सेक्टर में देना चाहिए, ऐसा भी लिमिट रख सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। व्हाट आर प्रायोरिटी सेक्टर्स इन इंडिया? Agriculture, micro and small enterprises, education, weaker sections, housing, export, these are priority sectors in India. इसको याद रखिए, आपको बताना चाहिए what are priority sectors in our country, because agriculture, otherwise what happened in if RBI won't interfere and if it won't tell keep this PSL norms, then no bank wants to give to these farmers, so they don't give loans to these farmers, then agriculture sector बहुत पीछे पड़ जाएगा, already many people are depending on it and the GDP contribution is very low, so agriculture, micro and small enterprises, education, weaker sections, housing, export, these are all priority sectors in India. Moral suasion means RBI can conduct seminars and can guide the banks how to proceed further. अगर आप तभी भी नहीं समझेगा तो RBI can take direct action also. So these are qualitative tools or selective tools or direct tools. Let's see in detail about PSL. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है इंडिया में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नाउ इन केस ऑफ फेल्यूर, अगर बैंक पीएसएल जितना परसेंट पीएसएल में देना है लोन उतना नहीं दिया तो क्या होगा? पहले कितना देना चाहिए? अगर कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स विथ मोर देन 20 ब्रांचेस इन इंडिया, दे हैव 40% ऑफ देयर लोन्स मस्ट बी गिवन टू पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर। दैट टू देयर इज सेक्शनल कट ऑफ। What is that? एग्रीकल्चर में 10% देना चाहिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 8% देना चाहिए, वीकर सेक्शंस 10% देना चाहिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज 7.5% देना चाहिए, अदर्स 4.5% देना चाहिए। इन केस ऑफ फेल्यूर, अगर वे नहीं दे पाएगा तो देन वॉट एवर इज द शॉर्टफॉल, दैट मनी विल बी टेकन बाय नाबार्ड एंड इट विल बी पुट इन ए फंड कॉल्ड RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, and that fund will be used to give loans to state governments for infrastructure development. They are long term loans, so that's why इससे अच्छा इसी में दे दे, PSL में दे दे। If foreign banks with less than or equal to 20 branches in India, that means generally less than or equal to 20 branches means there is no chance of having such branches in villages, they might be in metro cities and all, then PSL was 32% before, but in 2015 it is proposed to increase it to 40% in phased manner by 2020. हर साल 2% के हिसाब से बढ़ के 2020 तक 40% हो जाएगा, एंड इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कहीं भी दे दो, बट PSL में 32% was there, now it will become 40% by 2020 in phased manner. In case of failures, अगर if these banks will fail to give the required amount in PSL, then it will be taken by SIDBI. What is SIDBI, what is NABARD, हम आगे देखेंगे, don't take any tension। ऐसा मत सोचिए मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ, जो राइट टाइम पे सब आपको समझ में आएगा। एंड इट विल बी टेकन इनटू SCDF, स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड, इस पे डाला जाएगा, एंड दैट मनी विल बी यूज्ड टू गिव लोन्स टू स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। So this is all about what are PSL in India important, then in case of failure what happen is important. There is a new concept came called PSL certificates. What are PSL certificates? Sale of fulfillment of priority sector obligation but no risk or
suppose a bank gave more than PSL, suppose especially RRBs का काम क्या है, वे generally cooperative banks and all what they do, they generally give to दिस PSL लोगों को ही लोन में देता है. सपोज 40% इज द टारगेट, बट दे गेव 50% ऑफ देयर लोन्स टू PSL. दे हैव 10% एक्स्ट्रा. दैट एक्स्ट्रा लोन्स दैट दे हैव गिवन इन PSL, दे कैन मेक सर्टिफिकेट्स आउट ऑफ दैट एंड कैन सेल टू दोज बैंक्स विच फॉल shortfall, which are on downside, on lower side. So sale of fulfillment of priority sector obligation, that is called PSL certificate. But in this case, no risk or loan asset is being transferred. That means अगर मेरा एक बैंक है, मैंने PSL फुलफिल करके मेरे पास एक्सेस है, अगर मैं उस सर्टिफिकेट को किसी बैंक को भेज रहा हूं, आई सिर्फ सेल द सर्टिफिकेट एंड गेट सम मनी आउट ऑफ इट, बट आई कैन नॉट ट्रांसफर माई लोन. द लोन रिकलेक्ट करने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है. अगर वे लोन नहीं देता है वापस, वे नुकसान मुझे होता है. जो बैंक मेरा सर्टिफिकेट खरीदा उसको कुछ लेना देना नहीं है लोन से. सो आई एम नॉट ट्रांसफरिंग रिस्क और लोन एसेट, आई एम जस्ट सेलिंग द फुलफिलमेंट, that number I am selling in the form of certificate. Are you getting me? Otherwise watch the main video. So how to do this trade? This trade can be done through a portal, CBS portal called e-Kubar. RBI का portal है e-Kubar. इसके through this trade will be done. Who can do this? No need to remember, anybody can do this. Scheduled commercial banks, RRBs, local area banks, small finance banks, urban cooperative banks who have originated PSL eligible category loans can trade it. भी आपके सारे बैंक्स के बारे में आगे टॉपिक में देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा. नाउ डोंट टेक टू मच टेंस, जस्ट लीव इट. बट इतना याद रखें, ई कुबर के साथ चलता है ये ट्रेड, एंड फुलफिलमेंट मैं भेज रहा हूं, लोन एसेट और रिस्क को मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, का मतलब बैंक ट्रांसफर नहीं कर रहा है. And finally, there are 4 types of PSL certificates. One is PSLC agriculture. Agriculture के लिए अलग, PSLC small farmer and marginal farmers, then PSLC micro enterprises, PSLC general. Depending on the demand, the price will vary. Suppose agriculture का कोई ने बैंक का फुलफिल नहीं हुआ, सिर्फ मेरा बैंक फुलफिल किया है, मैं उस सर्टिफिकेट को ज्यादा दाम पे भेजूंगा. So I can sell that certificate at more high cost, right? So this is all what you need to know about PSL certificate. This is sufficient. Then there are limitations to monetary policy. Examples, so many deposits are there with the banks. Though RBI will increase CRR SLR by little, so bank may not react accordingly. मेरा पास इतना डिपॉजिट्स है, बिलियंस ऑफ रुपीस है, अगर आप 0.5% CRR बढ़ाएंगे तो भी मैं इंटरेस्ट रेट कम नहीं करूंगा, तो क्या कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आइडियली दे आर ओनली क्वांटिटेटिव टूल्स. सो दिस इज वन लिमिटेशन. लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. अगर किसी के पास फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं है, इफ ही इज टेकिंग लोन फ्रॉम ए मनी लेंडर इन द विलेज, तो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट और CRR SLR से उनको कोई लेना देना नहीं होता है. सो लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ए प्रॉब्लम, इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम इन इंडिया. ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस, लाइक क्रूड ऑयल प्राइस चेंज होता है तो उससे इन्फ्लेशन आता है, तो इट इज बियॉन्ड RBI कंट्रोल. सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस लाइक दिस. There was a committee formed, Urjit Patel committee, so it has recommended certain things. Important of those are, it told consider CPI while measuring inflation instead of WPI. Some of the beginners who doesn't understand what is CPI and WPI don't get confused. वे अगले टॉपिक्स में आएंगे, वहां आपको बेटर समझ में आएगा. Those who already know that, it is very simple. So WPI means wholesale price index. So wholesale market में basket of items goods का प्राइस कितना बेस ईयर से बड़ा है, दैट इज कॉल्ड WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स. बट वे मत कंसिडर करो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ले लो, का मतलब कंज्यूमर लेवल पे ये कितना बढ़ रहा है, दैट इज व्हाट टू कंसिडर. ये बोला है उर्जित पटेल कमेटी ने. सिमिलरली इन्फ्लेशन टारगेट रखना है 4% विद ए कुशन ऑफ +or-2%. दैट मीन्स 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन टारगेट होना चाहिए. इतना भी अगर 2% भी नहीं होता तो भी दिक्कत है, बिकॉज that is the problem with western countries. Then what happen, economic activity ही नहीं चलता है. That all we will understand in some other topic. Now don't focus on that.
Similarly, policy rate will be decided by monetary policy committee. So अभी क्या है, पहले इससे पहले governor of RBI used to define the monetary policy rate. Now not, एक committee बनाना चाहिए, monetary policy committee, that will decide the policy rate, and accordingly government has accepted all these things and it is made also. So hope you are getting. If you are beginner, then there will be a little problem. Then also it is summary lecture. Hope you understand. Watch the main lecture, you automatically clear. If you are not a beginner, you need not watch even the main lecture. You can directly understand from summary. We can save a lot of time also. Now let us understand what is Monetary Policy Committee. First is, it was set up by amending the Reserve Bank of India Act 1934. उस एक्ट को अमेंड करके इसको बनाया गया है. सेकेंड, इस पे 6 मेंबर्स होंगे. देयर विल बी ए पैनल ऑफ 6 मेंबर्स. आउट ऑफ दो 3 केम फ्रॉम आरबीआई, 3 कम फ्रॉम आरबीआई एंड 3 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. एंड दीज नॉमिनेटेड मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड फॉर 4 years एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. एंड इन केस ऑफ फेल्यूर, अगर वे टारगेट 2 to 6% के बीच में नहीं आएगा तो देन द रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन बाय दिस कमिटी. एमपीसी शैल इन द रिपोर्ट गिव रीजंस फॉर फेल्यूर, रेमेडियल एक्शंस एज वेल एज एस्टिमेटेड टाइम विद इन विच द इन्फ्लेशन टारगेट शैल बी अचीव्ड. वे सारे खुद बताएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. नेक्स्ट वी मूव टू फिस्कल पॉलिसी. First we have seen what is expenditure. There are 2 types of expenditure, capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure means simply by spending this money, either the asset will increase or liability will reduce. That means आप फालतू खर्चा नहीं कर रहे हैं, वे खर्च करने से कुछ खरीद रहे हो आप. That means एसेट बढ़ा रहे हैं या कुछ लोन वापस कर रहा है, इसका मतलब लाइबिलिटी कम कर रहा है. Then it is called capital expenditure. Examples: expenditure on land, machinery acquisition, similarly giving loans, clearing loans, etc. ये सारे याद नहीं रखना, कॉमन सेंस से समझ लीजिए. लोन दिया तो वापस भी मिलेगा, वापस लोन क्लियर कर दिया तो आपका लाइबिलिटी कम हुआ. सो लाइबिलिटी कम करे या एसेट बढ़े, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस कोई एसेट नहीं बढ़ रहा है, कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रहा है, देयर इज नो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, जस्ट आपको खर्च हो रहा है, डे टू डे में खर्च हो रहा है. देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लाइक डे टू डे एक्सपेंडिचर फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. सिमिलरली ग्रांट्स गिवन, अगर किसी स्टेट को गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, देन दैट मनी इज नॉट गोइंग टू बी बैक बिकॉज आपने दे दिया. सिमिलरली इंटरेस्ट पेड, लोन पे करेगा तो लाइबिलिटी कम हुआ. इंटरेस्ट इज ए एक्सपेंस, इंटरेस्ट पे करने से लाइबिलिटी कम नहीं हुआ. सो इंटरेस्ट, दीज आर ऑल कम अंडर रेवेन्यू. दैट मीन्स आपको ना लाइबिलिटी कम हो रहा है ना एसेट बढ़ रहा है, बट खर्च हो रहा है. देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. होप यू आर गेटिंग मी. दिस इज डिफरेंट बेस्ड ऑन हाउ द गवर्नमेंट स्पेंड मनी. देर आर अगेन 2 kinds, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड प्लान एक्सपेंडिचर. See, revenue and capital is a different category based on something else. Non-plan and plan is based on something else. There is no relation. Now non-plan and plan तो खत्म हो गया. इस बजट में वे बोला है non-plan plan को मर्ज कर दिया, अब there is no difference. That's why it is again into news. एक बार आइडिया रखे. Non-plan means government has no प्लान करके खर्च नहीं कर सकते गवर्नमेंट. इट हैज टू बी स्पेंट, ये मजबूरी है गवर्नमेंट के ऊपर. सो गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड दिस मनी, देन इट इज कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. इसका मतलब उनको पसंद है या नहीं है, करना पड़ेगा. व्हाट आर इंपॉर्टेंट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स इन इंडिया, इसको याद रख लीजिए. याद रखने का मतलब समझ लीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा. लोन दे दो या ना दे दो, लोन नहीं दे पाएंगे तो अगले साल दे दो, बट इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा. दिस इज मेजर पार्ट ऑफ इंडिया का सिस्टम में. सिमिलरली सैलरीज मस्ट बी पेड फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. सिमिलरली सब्सिडीज हैव टू बी गिवन बिकॉज द नेचर ऑफ आवर सिस्टम, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ऑल वी विल अंडरस्टैंड लेटर. सिमिलरली डिफेंस. These are 4 extremely important things you keep in mind. Interest payments, salaries, subsidies, defense. They are all under non-plan expenditure. कोई डाउट, मेन वीडियो को रेफर करिए. सिमिलरली मेंटेनेंस एंड पेंडिंग्स ऑफ
प्रीवियस प्लान एक्सपेंडिचर्स में कुछ पेंडिंग है, वे भी पहले जाना चाहिए, वे सारे नॉन प्लान है। उसके बाद आप प्लान करो, मे बी 5 ईयर प्लान बनाओ, इरिगेशन पे कुछ बनाओ, ये बनाओ, वे तब स्पेंड करो। सो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स मींस इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, सब्सिडीज, डिफेंस एंड प्रीवियस प्लान्स का मेंटेनेंस एंड एक्सपेंडिचर, अदर पेंडिंग्स। सो ये याद रखिए। Similarly, we have seen receipts. Receipt means income. इस पे भी दो तरीका है, कैपिटल रिसिप्ट्स, दैट मींस कैपिटल इनकम। अगेन सेम, कैपिटल रिसिप्ट मींस इनकम तो आया है, लेकिन कैसा आया है, ये इधर आपका एसेट रिड्यूस हुआ, आप एसेट बेच के पैसा लेके आया, इसका मतलब एसेट कम हो गया, और लाइबिलिटी बढ़ा के पैसा लेके आया, दैट मींस लोन में लेके आया, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। एग्जांपल्स, डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम पीएसयूज का शेयर्स आपने बेच दिया, देन आपके एसेट कम हो गया, देन पैसा आया, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली आप लोन में पैसा लेके आया, आपका लाइबिलिटी बढ़ गया, देन यू गॉट मनी, देन इट इज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल का मतलब इसका इंपैक्ट कल भी रहेगी। रेवेन्यू रिसिप्ट मींस इनकम, यहां रेवेन्यू इज नॉट इनकम, यहां रिसिप्ट इज इनकम, रेवेन्यू मींस डे टू डे। रेवेन्यू रिसिप्ट मींस डे टू डे इनकम, दैट मींस आपने कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ाया, एसेट कम नहीं किया, लेकिन आपके पास पैसा आया, मींस आपने कमाया। कैसा जनरली कैसा आता है, इधर टैक्स में आता है, टैक्स रेवेन्यू, और देयर आर अदर इनकम, टैक्स के अलावा भी अदर रेवेन्यू सोर्सेस, लाइक डिविडेंड आया है। अगर शेयर्स डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आया तो एसेट कम हो गया, डिविडेंड आया तो कोई शेयर कम नहीं हुआ, आपको प्रॉफिट आया है। सिमिलरली मे बी फॉर सच गवर्नमेंट सर्विसेज आपको कुछ फीस मिला है, मे बी हो सकता है कुछ आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपका 2 व्हीलर का चालान हो गया, तो दैट मनी विल गो टू गवर्नमेंट, दैट काइंड ऑफ सोर्सेस, minor part. So this is revenue receipts. Don't mug up the examples, understand the nature. Capital receipt means पैसा तो आया है, लेकिन आपका एसेट कम हुआ है या लाइबिलिटी बढ़ गया है। रेवेन्यू रिसिप्ट में पैसा आया है, लेकिन आपको कोई एसेट कम नहीं हुआ, कोई लाइबिलिटी बढ़ा नहीं, बट पैसा आ गया, दैट मीन्स आपका कमाई है, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। Then deficit. There are 4 types of deficits you must keep in mind. One is revenue deficit. Revenue deficit means day to day deficit. That means simply revenue expenditure minus revenue receipt. मतलब अगर आपको डे टू डे खर्चा ज्यादा है डे टू डे कमाई से, तो आपको डेफिसिट आएगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। बट बिफोर सीइंग फिस्कल डेफिसिट and before seeing primary deficit, let's understand budgetary deficit. बजटरी डेफिसिट मीन चाहे कैपिटल है या रेवेन्यू है, ओवरऑल डेफिसिट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स का मतलब ओवरऑल कितना कम पड़ रहा है, दैट इज बजटरी डेफिसिट, राइट, सिंपल। ना बजटरी डेफिसिट में से अगर बोरोइंग्स निकाले, मतलब आप बोरो करके लेके आके डेफिसिट जीरो दिखा सकते हैं, बट ये नहीं चाहता हूं मैं, बोरो बाद में करेंगे, बोरोइंग्स निकालेंगे तो देन व्हाट इज द डेफिसिट, ओवरऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू सारे मिला के लोन में मत लेके आओ, देन कितना कम पड़ रहा है बिफोर गेटिंग द बोरोइंग्स, देन दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट, you can see here, fiscal deficit is total budgetary deficit minus borrowings. Excluding borrowings, the deficit is called fiscal deficit. And primary deficit means excluding borrowings and excluding net interest liabilities. You see, गवर्नमेंट ने पिछले साल लोन लेके आया, उसका इंटरेस्ट इस साल पे किया, इसकी वजह से मुझे ज्यादा डेफिसिट आया, का मतलब ये गलती इस साल का नहीं था, पिछले साल का इंपैक्ट इस साल पड़ा, तो माई हाउ कैन आई मेजर दिस ईयर इंपैक्ट, बाय रिमूविंग द नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। चाहे मैं पे कर रहा हूं या मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है पिछले साल का या प्रीवियस पास्ट लोन्स का, वे मैं अभी कंसिडर नहीं करूंगा। देन आई अंडरस्टैंड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी मींस बेसिक, बेसिक मींस इस साल कितना डेफिसिट आया है, दैट टेल्स। होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, otherwise pause it and watch it, very basic hai, no need to mug up, from name itself you can identify it. Next some important definitions देखेंगे हम। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? सो डेफिसिट फाइनेंसिंग इसलिए जरूरत है,
फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. वाई टू डू डेफिसिट फाइनेंसिंग? अगर डेफिसिट आया तो उसको गैप को कवर ना करो, डेफिसिट रहने दो एंड डोंट टेक एनी लोन एंड डोंट फिल इट, का मतलब खर्चा कम करो. बट स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकता है, बिकॉज हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को एनहेंस करना है. देन ओनली पीपल विल, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा तभी मोर जॉब्स आएगा एंड मोर पीपल अगेन विल अर्न एंड पे टैक्स एंड ऑल. सो दैट्स वाई. But what are the ways for deficit financing? The most important way is debt, कर्जा लेना. Most of the governments do this. Then next least preference is, कम preference is increasing tax. Tax increase करना is the next preference, and least preferred is printing money. Printing money is not very inflationary in effect, so no government want to do this, but it is the least preference. प्रिंट करेंगे तो भी विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी. इफ यू जस्ट कीप प्रिंटिंग मनी, सो द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस एंड मनी सर्कुलेशन इतना बढ़ जाएगा, बट देर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नो प्रोडक्शन. देन यू कैन नॉट गेट एनीथिंग फॉर मनी. इवन जस्ट टू बाय स्मॉल थिंग यू हैव टू टेक लॉट ऑफ मनी. दैट इज गुड फॉर नथिंग. सो दैट्स व्हाई प्रिंटिंग मनी इज लीस्ट प्रेफर्ड. मोस्ट प्रेफर्ड इज डेप्ट. देन व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? Economic development means economic activity अच्छा चल रहा है, means enhanced economic activity है, that is called economic development or economic growth. And what is required for economic development? Capital formation is there in a country, then definitely economic development come. Because if there is capital, then it can be invested and then jobs can be created. Means ultimately the idea is to keep people engaged. Right? So economic development will definitely occur if there is capital formation. What is fiscal stimulus? Fiscal stimulus means stimulating the economy. That means the government desperately if wants to enhance the economic activity, that is called fiscal stimulus. So it is an intense affirmative action of the government to boost economic activity in the country. How it can be done? Economic activity बढ़ना होगा तो लोगों के पास पैसा रहना चाहिए. That means government can reduce tax and increase public spending. So more money will be there in the circulation, then more purchasing power, then factories can produce more production, then automatically more jobs, and hence again more money, again more salary, more money, again they can buy more, and like this. That cycle will be positive. So fiscal stimulus is that action of the government to boost economic activity. What is debt trap? बट एक्सट्रीम डेप्ट लेके डेप्ट फाइनेंस करते जाएगा विदाउट एनी लिमिट, तो ऐसा हो सकता है कंट्री इट फॉल इन डेप्ट ट्रैप. डेप्ट ट्रैप मींस इतना डेप्ट हो गया, इतना एक्सेसिव डेप्ट हो गया, इवन टू पे द इंटरेस्ट द गवर्नमेंट नीड टू बोरो. So even it is unable to pay the interest. To pay the interest also it need to take new loans. So that is called debt trap. Extremely bad. Fiscal cliff. फिस्कल स्टिमुलस हमने देख लिया. फिस्कल स्टिमुलस का मतलब गवर्नमेंट इज डूइंग सच एन एक्शन वेयर टैक्स इज रिड्यूस्ड एंड मनी पब्लिक स्पेंडिंग इज इंक्रीज्ड, सो मोर मनी विद people. But government indefinitely cannot do this. अगर if government indefinitely do this, it will fall in debt trap. So automatically sometime थोड़ा देर के लिए करेगा. Once government feels satisfactory, sufficient economic activity is going on, again it need to do the reverse. That means it need to increase the tax and reduce public spending. Then automatically what happen? Less cash with the public due to the rise in tax and decrease in public spending. Because of this अगेन लोगों को काम दिलवाना, ये काम करके इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, देन उससे पैसा टैक्स के फॉर्म में दोबारा वापस लेना, वे गवर्नमेंट का काम है. राइट? सो दैट इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस. देन व्हाट हैपन? दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फिस्कल क्लिफ, हैविंग लेस कैश इन द पब्लिक. व्हाट इज फिस्कल ड्रैग? नाउ विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, by creating more economic activity and more spending, then automatically inflation will come as well as more jobs. That means making people capable of earning. That means automatically they will come into tax brackets. So without explicitly raising the tax rate, bringing more people into tax paying bracket, then government revenue will increase, tax revenue will increase. So rise in government tax revenue without explicitly rising tax rate, but with more taxpayers into higher tax brackets due to inflation and earnings growth. That is called fiscal drag. That means dragging people into more earnings, hence they pay more tax. That is called
then government revenue increase, but without increasing the tax rate. That is called fiscal drag. That is ideal. That is what every government wants. What is quantitative easing? It is a Western concept. Actually, simply बात करें, when at the time of recession there is no money in the circulation, then what can be done? Introduce new money, means print new money. RBI नया money print करेगी, then it will buy government securities from the government and give that money to the government. Then government through public spending and other things, some other modes, it will introduce that money into circulation. Then circulation में money supply वापस आ गया. Then again economic activity boost होगा. Once economic activity boosts, again government will get that money back. How it get? Maybe government can give it to some companies which are into losses by purchasing those shares or bonds. Then again once they recover, again those bonds can be sold and get that money back, and it will give back to RBI, and that money will be destroyed. If it won't destroy for a long time, again there is a situation of inflation. So it is short period के लिए करता है वे. Actually doing it is wrong, but developed countries, developing countries का ऐसा situation आता है, then they can take debt from developed and something else. But developed country or whole world ही ऐसा situation में तो क्या करेगा? So it has to be. So that is quantitative easing. That means simply keyword क्या है exam point of view में? Introducing new money and hence it will go into the circulation and again taking it back and destroy. And one more word, fiscal consolidation. What is fiscal consolidation? That means reducing fiscal deficit. अगर deficit को कम कर रहा है, that means government is decreasing the spending and increasing tax, so automatically deficit कम कर रहा है, that is called fiscal consolidation. तो automatically उससे क्या होता है? Debt decrease कर सकता है. So this is all about this. Thank you for watching. If you do not understand this summary, please refer to the main video, but don't consider that this is difficult. This is not difficult. आपको ऐसा लगा तो it's your feeling. आप एक बार ध्यान से देखेंगे, then you realize how easy it is. Welcome friends. Welcome to Vamsi's Golden Series. Technology is also one of very important module. I am dividing technology into 6 parts: space technology, defense technology, nanotechnology and earth sciences, energy, computer, mobile, communication, information technologies, etc. Then health and biotechnology. So this is summary of space technology. What we are going to learn in this? First we will see basic terms, then orbits and satellites, then we are going to understand launch vehicles, then ISRO genesis, then space missions, International Space Station, and finally current updates, which is very important. Basic terms, what is satellite? This is not important. Basic terms you need not mug up, just for an idea I am giving. Any artificial object which has been intentionally placed into orbit is satellite. Spacecraft, any vehicle which can fly in outer space. Space shuttle which can do repeated journeys. Launch vehicle used to carry payload from Earth's surface into outer space. Rocket and jet, this is important. What is the difference? Rockets carry fuel and oxidizer both, whereas jets carry only fuel. They depend on atmosphere for oxygen. Payload, it is the carrying capacity of a launch vehicle. This is the general main equipment of the launch vehicle, which is going to be inserted into the orbit. Next we have seen various orbits. What is orbit? Satellites move in a path around the Earth or any other planet. That path, that is called orbit. Every satellite must have an orbital path, otherwise it will fall down because of gravitational force. So there will be particular speed given to the orbit depending on its height. Because of that speed, not actually with the speed, the gravitational force change the direction of that satellite. That's why it will be either in a circular or elliptical orbit. So it gains acceleration. That is called centrifugal force. It gets centrifugal force which will be balanced by the gravitational force. Hence the satellite does not fall back onto the Earth. Next, various types of orbits. Low Earth orbit.
Generally, this is also called polar orbit. Satellite moves from pole to pole in this orbit. Generally, they take around 90 minutes to complete one orbit. So when the satellite moves, the Earth rotates underneath. That's why when the satellite next come to the same place, it will not focus on the same place. There will be drift. इसमें there is something called SSO, sun synchronous orbit, low Earth orbit में. That means whenever the satellite crosses the equator, the local solar time will be same. That means like the precision and other things, if it changes with time, the satellite also auto adjust accordingly. No need to go deep, just itna bahut hai, don't dig deep into this. High Earth orbit. At a height of 36,000 kilometers approximately, exactly 35,800 kilometers, no need to mug up exactly, roughly 36,000 kilometers. So what happened, the orbital speed of the satellite will match with the orbital period of the Earth. So it takes 24 hours to make one orbit. So this is called geosynchronous orbit. Out of these, if the satellite is exactly above the equator in a circular orbit, that is called geostationary orbit. So geostationary is a part of, is a type of geosynchronous. Next we have seen medium Earth orbit. There are two types, semi-synchronous and molniya. What is the difference? Semi-synchronous is almost circular orbit at a height of 20,200 kilometers. At this height, it exactly takes 12 hours to complete one orbit, and it is generally the orbit used in GPS satellites. And second is molniya orbit. It is a Russian concept. It is highly elliptical orbit, high eccentricity, and in this orbit also satellite take 12 hours. When it come on to the place which it has to observe, it will be for more time. It will go highly elliptical and it will spend more time on that side. When it go other side, it will quickly come back because it will not go too far. So hope you can understand from the main video. If you do not understand, watch the main video. So it is generally useful for communications in polar countries. Not very important for us. Then satellites, remote sensing satellites. These are used for Earth observations, but they are not available 24/7 because of drift and all. So, there are two types, active and passive remote sensing. Active means they work at both night and day. Passive work only on daytime. They cannot, work at night time. We have communication satellite. They are used for communication purpose. They generally launched at 36,000 kilometers. They are available 24/7. And applications, if you talk of remote sensing, they are generally used for observation like Earth observation, disaster management, etc. Where you need clarity but not time bound. But in case of communication satellite, they are used in those applications which are time bound. For example, communication, navigation, climate and environment warning systems, etc. You can pause and watch it again if you do not understand. Next we understand launch vehicles. Before going for launch vehicles, first we understand various types of fuel. Solid fuel, what is used here? Aluminum powder binded by HTPB, hydroxyl terminated polybutadiene. It is highly stable. That means it won't undergo corrosion. So that's why it is preferred in missiles. But the direction of vehicle cannot be controlled. Generally, direction of vehicle will be controlled using on and off mechanism. Once solid fuel is burned, it cannot be stopped. So, direction of vehicle cannot be controlled. Liquid fuel, what is used here? UDMH, means unsymmetrical dimethyl hydrogen. Direction of vehicle can be controlled, but it is highly corrosive. Cryogenic means using applications of temperatures less than -150 degrees centigrade. Cryogenic applications include not only rocket fuels, they are also used in magnetic leviation like MRI and all, and even in surgery called cryosurgery by storing eye and certain body parts usko preserve karne ko hum use karenge. So cryogenic engines in rockets use liquid hydrogen at -253 degrees centigrade as fuel and liquid oxygen at -183 degrees centigrade as oxidizer. It is an important point. Applications, high thrust. Thrust is like mileage. So per unit amount of fuel, how far it can go. Similarly, it can carry heavier payloads. Generally, it is used in GSLV, which can carry more than 2000 kg.
payloads. Next we will understand launch vehicles. Early time pe we have started with sounding rockets. They are 1 or 2 stage sounding rockets, all solid fuel use karenge, solid propellant. Used for probing the upper atmosphere regions and for space research. Generally they use to observe atmosphere. They hardly go to 5 to 10 kilometers height and they observe. So early rocket was M100. First we used M100 sounding rocket from Russia, then Center from France. First launch was in 1963 from Tumba. So present we are using Rohini series satellites from ISRO, not satellites, sounding rockets. Then आया SLV and ASLV. SLV is a 4-stage rocket. All are solid fuel. First successful launch was in 1980. 1979 में try किया but it was not successful. 1980 was early successful. It can carry 40 kg payloads into low Earth orbit. Then ASLV, which is a 5-stage all solid. Capacity was 150 kg payloads. It can take up to 400 kilometers. Now we are not using these SLV and ASLV. These are retired. Just इतना याद रखिए कितना स्टेज है and approximate capacity. And first launch vehicle other than sounding rocket is SLV, that is 1980. That's why you remember that. Even remember first launch of sounding rocket in 1963. PSLV, which is still used and which made ISRO very popular. So PSLV is a 4-stage rocket launch vehicle and they are solid, liquid, solid, liquid, alternately solid and liquid. First stage is solid, second stage liquid, third stage solid, again fourth stage is liquid. It can carry up to 1600 kg payload into sun synchronous orbit and 1050 kg payload into GTO. GTO means if you want to put a satellite into geosynchronous orbit, or if you want to send a mission onto moon or something, the satellite will not be carried until up to the moon orbit. The launch vehicle is not going to take it till that height. It will keep at a orbit called geotransfer orbit. From that place, it automatically transferred into that orbit. Okay, that is called GTO. It is not something, don't get confused. GTO is the general orbit, at any height which will be placed, the satellite will be placed in that, then it automatically transfers into the desired orbit. So it can be boosted a little, suppose by using certain variants of PSLV like PSLV XL, PSLV HV. No need to go deep into this. There are many variants in PSLV like using some solid boosters. It can be taken up to 2000 kg also, but generally we have not taken any weight beyond 1600 kg till now using PSLV. So GSLV 3-stage solid, liquid and cryogenic, and liquid boosters bhi honge. So there are 3 stages development in India. GSLV Mk1 Mark 1. Mark 1, in early 2000s we have taken from Russia, we have taken 7 GSLV rockets. So they are called GSLV Mk1 Mark 1. They can carry up to 2000 kgs. We used them. Some of them are successful, some of them are failure. We need not go deep into that now. Then Mark 2 we have recently tested. India has indigenously developed. It can carry payloads up to 2500 kg. Now Mark 3 also we have tested. We are going to launch these also soon. So it can carry up to 4500 kg. Then RLV, reusable launch vehicle. So there are 2 types in RLV. One is TSTO. TSTO means 2-stage to orbit. So we use semi-cryogenic and cryogenic in this. Recently we have tested it successfully. And next is RLV Avatar. It is SSTO, that means single stage to orbit. It is being developed by ISRO and DRDO. Though this project was started before TSTO, but TSTO is easy to develop. That's why first we have developed TSTO and tested. Now Avatar is being developed. DRDO is also working along with ISRO. Ye yaad rakh lijiye. Avatar means it is single stage to orbit. Means only one carrier will take and it will come back. Important rocket launching stations in India. We have Balasore in Odisha, Abdul Kalam Island, formerly known as Wheeler Island in Odisha. These are used for missile testing. Then we have Sriharikota, Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh, which is generally used for our commercial satellites, to launch commercial satellites. Then we have Vikram Sarabhai Space Center in Tumba, Thiruvananthapuram. So generally sounding rockets will be launched from this. This Tumba is near, very close to Earth's magnetic equator.
Important launch stations in the world are, we have Vandenberg in California, the west coast of US, and we have Cape Canaveral in Florida, east coast of US. We have Kourou in French Guyana, and in Russia we have Plistek, and Baikonur in Kazakhstan, Jikon and Zhejiang in China, and Tanegashima in Japan. These are important, and Sriharkota in India. At least इतना आप याद रख लीजिए. If you find that I am going fast, you can pause it and watch. Now let us understand the genesis of ISRO. First we understand the introduction. So ISRO is directly come under Department of Science, which is directly under Prime Minister. You know, in India we have certain ministries as well as certain departments. Departments directly come under PM, like Department of Science also come under Prime Minister, and ISRO is under Department of Science. Space Commission will look after this independently. What are the milestones? In 1962, INCOSPAR was formed and TELS was established. 1963, this is important, first sounding rocket was launched from TELS. Then 1969, ISRO was formed, and 1972, Space Commission and DOS was set up, and ISRO was brought under DOS. 1975, first satellite was launched, that is Aryabhatta, and 1980, first launch vehicle was launched, that is SLV-3, which is successful in 1980. बस इतना आपको बहुत है, no need to know more. Important centers, we have ISAC, ISRO Satellite Application Center in Bangalore. It is responsible for fabrication of satellites. We have SAC Ahmedabad, which is for project planning. We have VASC, Vikram Sarabhai Space Center in Trivandrum, which is responsible for launch vehicle design. We have SDST, Satish Dhawan Space Center in Sriharkota, which is for launch, which is a launch station. We have IPRC, propulsion के लिए महेंद्रगिरी में है, तमिलनाडु. Then we have NRSC for data, IRS data acquisition and processing, Hyderabad mein hai. And we have Antrix, this is a private limited company wholly owned by Government of India for commercial dealings. बस इतना बहुत है आपको. If you have any doubt, you refer to the original video. So what are important space missions? First we will start with Mars. So Mangalyaan or Mars Orbiter mission, which was launched by India, the launch vehicle which carried this mission was PSLV C-25, because it is a milestone, so ये भी याद रखिए, PSLV C-25. It was launched in 2013 and reached there in 2014. No need to remember month and all. India is the first nation to successfully launch a mission to Mars in maiden attempt. First time only we are successful. And fourth space agency to reach Mars after Russia, NASA and Europe. So Russia, USA and Europe के बाद we are the fourth country to reach Mars. And we got Indira Gandhi Peace Prize for 2014. ISRO got it, and Space Pioneer Award in 2015. So these are the awards given for this success. This is sufficient because it was already done. No need to understand what are the payloads, what it does, what is the objective. No need of knowing all those things at this particular point of time, because we learned that at the time of launch. Now it is launched, we only see the achievements, not the purpose. Next, TGO, Trace Gas Orbiter. It is launched in collaboration with Russia and Europe. Roscosmos, Russia ka hai, and ESA, European Space Agency. Schiaparelli is the name of the probe used in this, which reached in October 2016. So it is to study trace gases on Mars. So इतना पूछ सकता है, what is Schiaparelli? Our TGO is launched onto which planet? Our TGO is a joint effort, joint collaboration of whom? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, because it is in news. जस्ट एक बार देख लीजिए. TGO, Roscosmos and ESA, Schiaparelli the probe reached in 2016, study trace gases in Mars. ये भी ऐसा स्टेटमेंट भी दे सकता है, TGO is about is planned to be launched onto Mars in 2018. ऐसा भी दे सकता है. तो इसलिए आपको बता होना चाहिए 2016 मगअप करने की जरूरत है, बट आपको बता होना चाहिए कौन सी लॉन्च्ड है, कौन सी लॉन्च होने वाला है. ओके, इट इज ऑलरेडी लॉन्च्ड, इट इज ऑलरेडी रीच्ड. नेक्स्ट, ऑन टू मून. चंद्रयान 1 इंडिया लॉन्च किया है 2008 में. PSLV C-11 हैज कैरीड. अगेन इट इज ए माइलस्टोन, सो याद रखिए PSLV C-11 planned to work. We thought it will work for 2 years, but it worked only for 312 days. Meanwhile, it has made 3400 orbits around the Earth, around the Moon, and it has sent 70,000 images. Recently, it was identified by some NASA has found it. So, but the communication was lost, but still it is in the orbit. That is what is being recently in news.
देन चंद्रयान 2 इज ए प्लान्ड थिंग, सो वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इट. इसमें तीन चीजें होंगे, आर्बिटर, लैंडर एंड रोवर, ऑल बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया. सो इट विल बी लॉन्च्ड इनटू 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर सर्कुलर लूनर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा. इट इज नॉट एट लॉन्च, इट विल बी लॉन्च्ड. ओके. जुपिटर एंड वीनस. जुपिटर पे रिसेंटली जूनो from NASA, it was launched in 2011 but reached in 2016. Galileo was already launched onto Jupiter by European Space Agency. The mission was ended in 2003. अगर statement आता है Juno is the first mission launched onto Jupiter, it is wrong. First mission by NASA, but Galileo was already launched by Europe. Then onto Venus, Akatsuki from Japan. It was launched in 2010 but reached in 2015. It is first Japanese Venusian probe. वीनस पे है. सो आकाशुकी कहां गया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वीनस पे गया है. किसने लॉन्च किया? जापान ने लॉन्च किया. नेक्स्ट एस्ट्रॉइड्स पे डॉन नासा ने लॉन्च किया है. वे 2011 में वेस्टा पहुंच गया, देन वहां 2012 में वेस्टा को छोड़ के आगे बढ़ा है. वे अभी सेरस पहुंच गया है 2015 में. नाउ इट इज इन सेरस, यू नो ड्वार्फ प्लैनेट सेरस एस्ट्रॉइड्स में बीच में. हाइबुजा 2 ये जापान का है. ये ryugu एस्ट्रॉइड पे जा रहा है. 2011 पे लॉन्च किया है. इट इज स्टिल गोइंग. इट विल बी रीच्ड इन 2018. देन ओसिरिस रेक्स ये नासा ने लॉन्च किया है. ये एस्ट्रॉइड 101955 पे बेन्नू पे जा रहा है. बेन्नू एस्ट्रॉइड पे जा रहा है. ये एक सैंपल रिटर्न मिशन है. It was launched in 2016. It will come back in 2023, taking the sample onto some material from Bennu. Important. Because it is in news. Osiris Rex, NASA, asteroid Bennu and sample return mission. बस इतना keywords आप mind में रखें. If you find that I am going fast, please pause it and watch it, or watch the original video. Comet, Rosetta, the probe is Philae. So even Rosetta लिखा भी सही है, Rosetta hyphen Philae लिखा भी एक ही बात है. So it was launched onto comet called 67P Churyumov. No need to remember this, इतना याद रखें. comet पे गया है. It was reached in 2014. Rosetta Philae ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है. नेक्स्ट आउटर सोलर सिस्टम में कैसनी हाइगन्स नासा एंड यूएसए मिलकर लॉन्च किया है. 1997 में लॉन्च किया है. इट पास्ड वीनस, जुपिटर एंड प्रेजेंटली इट इज एट सैटर्न. अभी सैटर्न में है कैसनी हाइगन्स. इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. कैसनी लिखा भी एक ही बात है. हाइगन्स इज द प्रोब. सो कैसनी और कैसनी हाइगन्स दोनों एक ही बात है. सो इट इज एट सैटर्न. न्यू हॉरिजन्स ये नासा का है. इट रीच्ड चरण इज ए मून ऑफ प्लूटो. सो नाउ वहां से निकल चुका है. नाउ डेस्टिन टू 2014 MU69 ये कूपर बेल्ट में, ये प्लूटो के आसपास जो कूपर बेल्ट है उस पे एक जगह जा रहा है. सो 2014 MU69 पे. सो इतना याद रखे आउटर सोलर सिस्टम में है. नो नीड इतना डीप में नहीं पूछेगा कहां एग्जैक्टली कहां जा रहा है, बट आउटर सोलर सिस्टम में है. न्यू हॉरिजन्स का मिशन. नेक्स्ट वोयेजर 1 इज द फार्देस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टिल नाउ. ये नासा का है, बहुत पुराना लॉन्च किया है. इट हैज लेफ्ट आवर सोलर सिस्टम एंड इट इज इनटू इंटरस्टेलर स्पेस. वोयेजर 2 ये भी नासा का है. इट आल्सो प्लान टू गो आउट ऑफ द स्पेस बट स्टिल इट इज इनटू सोलर सिस्टम ओनली. इट इज येट टू लीव सोलर सिस्टम. सो वोयेजर 1 एंड वोयेजर 2 विल गो इनटू इंटरस्टेलर स्पेस. वोयेजर 1 ऑलरेडी पहुंच चुका है. वोयेजर 2 पहुंचने वाला है. न्यू हॉरिजन्स अभी कूपर बेल्ट में है. ये नासा का है. कैसनी हाइगन्स नासा यूएसए का. इट इज नाउ एट सैटर्न. आई नो दैट इट इज इंपॉर्टेंट. रेयर केस में क्वेश्चंस आते रहता है, बट ये थोड़ा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस पे इस स्लाइड में. तो आई रिकमेंड यू टू पॉज दिस स्लाइड फॉर 2 minutes एंड वॉच केयरफुली सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स. नेक्स्ट रिसेंटली एंडेड मिशंस की बात करें. मैसेंजर वाज लॉन्च्ड बाय नासा ऑनटू मेर्क्यूरी व्हिच वाज एंडेड इन 2015. सो मैसेंजर फ्रॉम मेर्क्यूरी बाय नासा एंडेड. Similarly, Venus Express by European Space Agency onto Venus, which was ended in 2014. These are 2 missions which was recently ended. ये भी mind में रखे. So these are all space missions. Now we move on to International Space Station. What is it? So it is a large spacecraft orbiting around the Earth. So it is a home where astronauts live. यहाँ एस्ट्रोनॉट्स जाके अपना रिसर्च करेगा. हाउ स्पेस में डिफरेंट चीजों का ऐसा काम करता है. दे डू रिसर्च. वेयर इज इट? इट इज ऑर्बिटिंग एट ए हाइट ऑफ 360 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली अबव अर्थ. हाउ ओल्ड इज इट?
The first piece was launched by Russia in 1998 and first man entered in 2000. And which countries are involved? So Canada, Japan, Russia, United States and 11 member states of European Space Agency. No need to know what are those 11 countries, but you remember this. Total 15 countries are involved: Canada, Japan, Russia, US and 11 members of ESA. So they are all together are doing with an memorandum of understanding. So they are working on it. India is not part of it. So let's move on to current updates. Very, very important. First we understand ISRO satellites, then we understand ISRO launch vehicles, then we understand ISRO ka other programs, then we understand what is going on in the world, then finally we understand certain miscellaneous concepts. So this way I am dividing so that you can easily remember. First let us start with ISRO satellites. What we are going to see here: IRNSS and Navik, then Gagan, then AstroSat, then ResourceSat 2A, and GSAT 18 and INSAT 3DR. These are 6 satellites which were into news for last 1 year. So IRNSS or Navik. So there are 7 satellites in this. 3 are geostationary, 4 are geosynchronous. याद रखिए, 3 stationary, 4 synchronous. Stationary means they will be exactly placed above the equator in circular orbit. Synchronous means they are not exactly above equator, they keep drifting north and south, they are in elliptical orbit. There are 2 kinds of services it provides: standard positioning service for common people and restricted service for defense and other security purposes. India is the 5th country to have its own navigation system after USA Navstar GPS, Russia ka GLONASS, Europe ka Galileo, China ka BEDO. After that India is the 5th country to have it. This much information is sufficient. Gagan. Gagan has 3 satellites. It is a constellation of 3 satellites. It is jointly developed by ISRO and AAI, Airport Authority of India. It gives 10 times more precise compared to GPS and radio navigation aids used for precision landing. So it is generally used for aircraft landing and precision. So it gives more precise data compared to GPS. So Gagan ka matlab GPS aided geo augmented navigation. So India is the 4th country in the world to have interoperable satellite based augmentation system after USA, Europe and Japan. So after US, Europe and Japan, India is the country to have it. And in the equatorial region, India is the only country to have it. So again, achievement yaad rakhiye. Both IRNSS and Gagan already been done. They are already been placed in the orbit and they are working. AstroSat. AstroSat is carried by PSLV C-30. AstroSat का payload है 750 kg. Along with it, 6 other satellites were also carried and USA का पहले बार USA का commercial satellite भी हम इसके साथ carry किया है. Total payload was 1631 kg. No need to mug up. इतना याद रखिए, वे अपना PSLV carry किया है. India's first dedicated satellite है for astronomy research. This is important. It is first dedicated satellite for astronomy research. AstroSat. Recently introduced in 2015. And India is the 5th country to have this after USA, Japan, Russia and Europe. ये तीनों achievements याद रखिए. IRNS में भी 5th country है, Gagan में 4th है. And here if you see in AstroSat again it is 5th country. वे आपको याद रखना है. ResourceSat 2A, which was recently taken into orbit by PSLV C-36. The payload is 1235 kg. No need to mug up, but इतना याद रखिए 2000 से ज़्यादा तो नहीं है, because अपना आप PSLV carry कर रहा है. And it was placed into 817 km sun synchronous orbit. It is useful for agriculture applications like crop area and crop production estimation. ये resources को study करेगी. Then GSAT 18. GSAT 18 is a communication satellite. It was placed into orbit by launch vehicle ARAN from Kourou. ARAN is a European Space Agency का launch vehicle है. its weight is 3400 kg approximately. So इतना weight हम launch नहीं कर पाएंगे, अभी हम testing phase में है, तो इसलिए ARAN launch किया है. And it is a communication satellite. ये भी 2016 में launch किया गया है. And INSAT 3DR.
INSAT 3DR, GSLV. You see, INSAT, this is a communication satellite. This satellite was launched by our own GSLV. This is important. You see, these are all launched by not PSLVs. These are launched by AIRAN. These are also launched by AIRAN, but no need because it was launched long time back. AstroSat, since it is not communication, it is launched by PSLV. ResourceSat, it is not communication, so it is observation satellite again, so launched by PSLV. GSAT, communication, so launched by AIRAN. But this is the only communication satellite in recent years which was launched by indigenously developed GSLV. So this is the only satellite launched by GSLV during last 1 year. Rest all communication satellites like GSAT 18 are launched by AIRAN. So GSLV F05 launch किया है 2241 kg because it is Mark II. It can carry up to 2500 kg. That's why it is 2241 kg which was launched by GSLV. स्टेटमेंट आएगा INSAT 3DR वाज लॉन्च्ड बाय AIRAN, ऐसा स्टेटमेंट आएगा. आपको लगेगा INSAT का मतलब है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सो ऑब्वियसली ये वेदर सैटेलाइट है. वेदर सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन geosynchronous orbit, so it must have been launched by AIRAN. आपका ऐसा thought आ सकता है, but no, it is launched by GSLV and it is advanced meteorological satellite. That means weather observation satellite. Weather observation is not general earth observation. Weather observe करने के लिए 24/7 available होना चाहिए. That's why it will be placed in geostationary orbit, or sorry, geosynchronous orbit. Stationary हो या synchronous हो. Hope you understand what I mean. If you find I am going fast, you can pause and watch it again. Then we'll go for ISRO launch vehicles. ISRO satellites we have seen. Now we will see ISRO launch vehicles. So PSLV C-37, PSLV C-35. Why I am not giving 36? Because 36 we have already seen in the satellite. What satellite? ResourceSat 2A was launched by 36. Then PSLV C-34, scramjet and reusable launch vehicle TD. So RLV TD. So these are 5 things which are in news for last 1 year. Now let us start with recent launch vehicles. First is PSLV C-37. See, जहां सैटेलाइट इंपॉर्टेंट था वे मैं सैटेलाइट्स में कवर किया, जहां लॉन्च व्हीकल इंपॉर्टेंट है वे मैं यहां कवर कर रहा हूं. PSLV C-37 is in news and it is important because it has carried or it has made a world record by carrying 104 satellites. So 104 satellites को at a time a orbit में पहुंचा दिया PSLV C-37. So the total payload including all these 104 satellites is 1378 kg. See, सब मिला के भी इतना ही है because PSLV cannot carry more than 1600. अगर ये you know that. So 1378 kg. No need to mug up exactly the figure, but एक idea के लिए मैं बता रहा हूं. What is the main satellite? Main payload क्या है इन सारे 104 में? That is Cartosat 2 series. ये याद रखिए. So what is the main payload out of these 104 satellites? Cartosat 2 series satellite. जिसका वेट है 714 kg. ये मगअप करने की जरूरत नहीं 714, बट ये बोल रहा है अगर एक स्टेटमेंट दिया होता है एग्जाम में दैट यू नो द मेन पेलोड ऑफ PSLV C-37 which made a world record of carrying 104 satellites वे इज 1600 kg. ऐसा देता है तो गलत है बिकॉज सारे मिलके ही 1600 नहीं है, ओनली मेन पेलोड 1600 कहां से आएंगे. सो इतना याद रखिए, रफली total itself is 1300 and 1400 and main payload is half of that approximately. And it was launched into 505 किलोमीटर sun synchronous orbit. वे भी आपको याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसा एग्जाम में कभी नहीं देगा. 505 के जगह 515 नहीं देगा, बट ये दे सकता है द PSLV C-37 put the payloads into 1600 kilometer GTO. GTO means geo transfer orbit. Transfer orbit means generally GSLV जो स्टेशनरी सिंक्रोनस में जाना है उस सैटेलाइट को वहां लॉन्च करता है. सो ये तो है ही नहीं बिकॉज इट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. इतना माइंड में होना चाहिए आपको. नो नीड टू नो एग्जैक्टली. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन वॉच द मेन वीडियो. सो Cartosat 2 series was the main payload. 104 satellites carry किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है. Total payload itself is less than 1400 and main payload is around 700 and it was launched into around 500 kilometer SSO. And total 3 Indian satellites थे. One is Cartosat 2 series and 2 more Indian satellites. And
contribution are most of the satellites are from USA. 96 satellites are from US and 5 are from 5 different countries. No need to know which countries, you do not require. Itna deep mein पूछेगा नहीं. Just 3 Indian satellites along with Cartosat 2 more which are small satellites, nano satellites, and 96 from US and 5 from other countries. Important इतना है PSLV C30. इसी क्वेश्चन कैसा आता है, इतना डीप में नहीं आएगा. कॉलम ए में हो सकता है PSLV C11 because it is important because it has carried Chandrayaan. Similarly PSLV C25 it is important because it carried Mangalyaan. Similarly PSLV C37 ये तीनों देगा. Then he will give 3 other, maybe Chandrayaan, maybe 104 satellites, maybe 8 satellites in 2 different orbits. मैच करो और which of the above is correctly matched, ऐसा पूछ सकता है. बस इससे ज्यादा broadly समझ लीजिए. Don't go deep and waste your time. Next PSLV C35. मैं 36 यहाँ नहीं बता रहा हूं क्योंकि 36 we have already covered in satellites because 36 has no importance. 36 में कैरियर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, ओनली रिसोर्स सेट 2 को लेके गया है. रिसोर्स सेट 2A हम देख लिया वे सैटेलाइट्स में because which was launched in 2016. Then PSLV C35 it is important because it has taken 8 satellites into 2 different orbits. 8 सैटेलाइट्स तो बहुत बड़ी नंबर नहीं है, लेकिन वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां 104 सैटेलाइट्स लेके गया, लेकिन सारे 104 सैटेलाइट्स को एक ही ऑर्बिट में लेके गया. ऑल दीज सैटेलाइट्स वर प्लेस्ड इन दिस ऑर्बिट ओनली, बट इन दिस केस इट हैज टेकन दीज 8 सैटेलाइट्स इनटू 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स. What does it mean? इसका मेन सैटेलाइट और मेन पेलोड क्या था? SCATSat-1 which is a weather satellite. So SCATSat-1 को लेके गया 720 किलोमीटर पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में. मगअप करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट एक आइडिया के लिए बता रहा हूं. जिसका वेट है 371 kg. अगेन मगअप करने की जरूरत नहीं, बट इतना याद रखिए 2000 kg से ज्यादा नहीं है. अगर ऐसा देता है गलत है. सो इसको लेके गया 720 किलोमीटर पोलर SSO में. देन अदर्स 7 सैटेलाइट्स को लेके गया 670 किलोमीटर पोलर ऑर्बिट में. इसका मतलब पहले यहां गया, इसको लॉन्च किया, फिर यहां आया, देन रिमेनिंग को लॉन्च किया. दैट मींस इट हैज लॉन्च्ड दीस सैटेलाइट्स इनटू 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स. दैट्स व्हाई इट इज अगेन सम माइलस्टोन. सो PSLV C35. देन PSLV C34. It is not important now, but before sending 104 satellites, it was record of India that launching 20 satellites in a single flight. So PSLV C34 has launched 20 satellites in a single flight and total payload including all these 20 satellites was 1288 kg. and इसका मेन सैटेलाइट भी Cartosat 2 सीरीज था. जब भी इतना बड़ी ज्यादा नंबर सैटेलाइट्स लेके जा रहा है तब Cartosat 2 को लेके जा रहा है. यहाँ भी Are you getting me? So main satellite again Cartosat 2 and इसका वेट भी 727 kg. का मतलब Cartosat का वेट अराउंड 700 में रह रहा है. यहाँ भी उसके साथ कुछ और सैटेलाइट्स को भी लेके जा रहा है बिकॉज PSLV का पेलोड का कैपेसिटी और भी कुछ बचा है. एंड वे लेके गया 505 किलोमीटर पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में. बट मगअप मत करिए, जस्ट एक आइडिया के लिए, माय सेटिस्फैक्शन के लिए मैं सब लिख रहा हूं. बट यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन रिमेंबरिंग ऑल दी थिंग्स, यू डू नॉट रिक्वायर. बट आइडिया रखिए, ऐसा देता ना वे 2000 किलोमीटर GTO में लॉन्च किया, गलत है. GTO में उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे जो सिंक्रोनस में पहुंचेगा, 36,000 पहुंचेगा या किसी और प्लेनेट पे पहुंचेगा. ओके. एंड व्हाट इज दिस Cartosat 2 सीरीज? बिकॉज हम बार बार देख रहे हैं, यहां भी देखा PSLV C37 में भी एंड 34 में भी. सो Cartosat सीरीज इज यूजफुल फॉर कार्टोग्राफिक एप्लीकेशंस लाइक अर्बन एंड रूरल एप्लीकेशंस, कोस्टल लैंड यूज का मतलब ये सारे आपको आइडिया देगा लैंड पे. इवन सर्वे में इकोनॉमिक्स में ये चीज बताया है. सो द कॉर्पोरेशंस और म्युनिसिपैलिटीज दे आर अनेबल टू यूज देयर रिसोर्सेज. दैट मींस जितना टैक्स उसको मिलना चाहिए उतना ले नहीं पा रहा है. सो दे नीड to take the advantage of space technology to identify the resources. It is a kind of example. So Cartosat. Then scramjet. Scramjet means jet, you understand? So इसमें oxidizer नहीं होता है. That's why they are called air breathing engines because they take oxidizer from the atmosphere. So it uses hydrogen as fuel, but oxygen it does not carry. It will take oxygen from the atmosphere. So it was tested, maiden short duration experimental test of ISRO scramjet engine with a hypersonic flight at Mach 6. ये कोई काम का नहीं, डोंट मगअप. Mach 6 का मतलब, Mach का मतलब if something travels at the speed of
speed of sound means 330 meter per second, then it is called Mach 1. Mach 6 means 6 times the speed of sound it can travel. But we are not interested in all such things. हमने कोई टेक्नोलॉजी, हमने इसको कोई लेना देना नहीं. हम कितना बताना चाहिए, आई एम बीइंग ए सिटीजन और बीइंग एन IAS ऑफिसर, ऑफ कोर्स नॉट बीइंग बट होने वाला IAS ऑफिसर होके मैं इतना प्राउड हूं दैट यू नो इंडिया हैज टेस्टेड. बस ये आपका काम का है. एंड इस पे 2 स्टेज स्पिन स्टेबलाइजर लॉन्चर यूज किया है. इट इज ए 2 स्टेज. वे सारे कोई काम का नहीं. इसमें यूज किया है रोहिणी RH560 साउंडिंग रॉकेट इंजन. सो इट इज बेस्ड ऑन दीज मोटर्स आर बेस्ड ऑन दिस. बट ही इज नॉट गोइंग टू आस्क ऑल दी थिंग्स. हम क्या करेंगे, वे क्या है, उसका डायमीटर कितना है, हम क्यों पढ़ेंगे सब ये सारे. हम साइंटिस्ट थोड़ी है. हम तो सिर्फ ये जानना है हमने क्या कर रहा है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज पॉइंट्स. जस्ट एक सेटिस्फैक्शन और एक आइडिया के लिए मैं तो बता रहा हूं, क्योंकि इतना भी नहीं बताऊंगा तो आपको 16 दिन नहीं लगेगा, क्योंकि 10 दिन और 8 दिन में सिलेबस खत्म होगा. आप मानेगा नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे. इसलिए मैं थोड़ा खींचने के लिए ये बता रहा हूं. बट डोंट रिमेंबर. बट ये जरूर याद रखिए, इंडिया इज 4th कंट्री टू टेस्ट दिस आफ्टर US, रशिया, यूरोप. आई एम प्राउड टू से दिस. दैट्स व्हाई सिंस इट इज समथिंग टू नो, सो ये आपको जानना है. So India is the 4th nation after. ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, इंडिया इज द 2nd कंट्री ओनली आफ्टर USA टू टेस्ट दिस. ऐसा दे सकता है, गलत है. बिकॉज रशिया एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी आल्सो हैज डन दैट. सो 4th कंट्री. So I am only interested what is jet, which is air breathing, which will not carry oxidizer, and हमने successfully test किया है, and we are 4th country to test it after US, Russia, USA. This is sufficient for me for the exam point of view. Try to understand me. आप कल इसरो जाके इसको कोई साइंटिस्ट की जगह आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है. सो नो नीड टू नो वेदर इट गो Mach 6 एंड ऑल. इट इज ऑल नॉनसेंस फॉर यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है. सो द HS9 सॉलिड रॉकेट बूस्टर कैरिड इट. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. कौन सी कैरी किया, कौन सी बूस्टर, वे सारे ये कहीं नहीं पूछने वाला. मैं दोबारा बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं. द पेपर सेटर इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस नॉनसेंस बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन नॉट अंडरस्टैंड. व्हाई विल ही आस्क यू? And that too you are going to be an IAS officer. Why should you know all this nonsense? You are not interested. But हमको ये बताना चाहिए, it is a 2 stage to orbit. वे 2 स्टेजेस में पहुंचेगा ऑर्बिट में. एक स्टेज लेके जाएगा लाइक 56 किलोमीटर. कोई याद रखने की जरूरत नहीं, वैसा बता रहा हूं. 56 किलोमीटर तक एक एयरप्लेन जैसा चीज लेके जाएगा, जेट लेके जाएगा. वहां से रॉकेट विल बी लॉन्च्ड एंड इट विल गो. देन दैट जेट विल कम बैक लाइक एंड लैंड लाइक एन एरोप्लेन. एंड दैट रॉकेट आफ्टर placing the satellite into orbit, again it will come back with the help of balloons, and it will fall freely onto Bay of Bengal. Then our ship will go and bring it. So both will be recovered. It is 2 stage. जैसा हमने आगे पहले देखा था पिछले, that is a single stage to orbit also we are testing. Avatar, it is in developing stage. So इतना याद रखिए, RLV reusable launch vehicle हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, एंड इट इज ए 2 स्टेज. एंड HS9 सॉलिड रॉकेट बूस्टर कैरी किया या कुछ और कैरी किया, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन माई सेल्फ दिखाया आपको. होप यू अंडरस्टैंड दिस. These are all important launch vehicles which were in use last 1 year, 1.5 years से. Now we will move on to other programs of ISRO. इसमें 2 चीज आपको याद रखना है. एक आदित्य L1 मिशन एंड सेकंड इज निसार. फर्स्ट इज आदित्य L1. आदित्य L1 क्या है? इट इज प्लान्ड मिशन. इट हैज नॉट एट लॉन्च. इट विल बी प्लानिंग इन 2020. इसरो का मिशन होगा, हम ही लॉन्च करेंगे. एंड इट विल बी लॉन्च्ड इन L1. L1 मींस Lagrange's point 1. व्हाट इज Lagrange's point? आई विल टेल यू इन ए व्हाइल. ये L1 में लॉन्च करेंगे. There are total 5 Lagrange's points that are identified. L1, L2, L3, L4, L5. We are not interested in all others. बस इतना याद रखें. 5 Lagrange's points है. L1, which is at 1.5 million kilometer from Earth. Between Earth and Sun, you know what is the distance between Earth and Sun? 150 million kilometers. Out of that, L1 is at a distance of 1.5 million kilometer from Earth. What is Lagrange's point? At that point, the net gravitational force or the combined gravitational force of 2 large bodies will be balanced and will be 0. So the satellite can be parked there. So it need not go in an orbit. It will not fall down, neither fall onto the Earth, neither fall onto the Sun. So it could be between Earth and Moon also.
Are you getting what I mean? If you have any problem, please go through the main video. So Lagrange's point is a point where the combined gravitational forces of two large bodies onto a single bodies, two large bodies generally could be Earth and Sun or Earth and Moon, like that. Small body could be satellite, will be balanced, that means zero. So satellite can be parked there. So without disturbance, that satellite can focus on its work. That is what is that. पहले हम आदित्य L1 मिशन का नाम था आदित्य 1, क्योंकि हम इसको L1 में लॉन्च करने का प्लान नहीं किया था, मे बी 800 और 900 किलोमीटर पे लॉन्च करने का प्लान किया था, वहां से सन को ऑब्जर्व करेगी, बट बाद में इसको अपग्रेड किया है हम, एंड वी हैव प्लान नाउ टू लॉन्च इट in L1 so that without disturbance it can observe the sun. पहले एक ही पेलोड प्लान किया था so that it can only observe the coronagraph of the sun. ये सारे क्या है मैं वैसा बता रहा हूं, कोई काम का नहीं. Now it is uploaded, now there are more payloads so that it can better study the sun. Now it is the first mission to study the sun and 6 payloads are there now. No need to remember how many payloads. निसार क्या है? निसार is ISRO and NASA का प्रोजेक्ट. It is also planned in 2020. NASA ISRO synthetic aperture radar. बस इतना याद रखिए, फर्स्ट radar imaging satellite to use dual frequency. What is dual frequency and all हमको जरूरत ही नहीं, हम इतना डीप में डिग करना ही नहीं. And it understand natural process of Earth. Got it? So we have seen this. Now we'll go to world. World में चाइना क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है एंड यूएसए क्या कर रहा है, वे सारे देखना है हमने. सो चाइना की बात करें, फर्स्ट थिंग एक है क्वेस्ट सैटेलाइट, क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल्स. क्वेस्ट सैटेलाइट वे हैक प्रूफ कम्युनिकेशन देता है बिटवीन स्पेस एंड ग्राउंड. इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय चाइना. सिमिलरली टियानगांग 2, it is a space station launched by China at 380 kilometers above Earth. 2 astronauts went there and spent the whole October 2016 there. Then Pulsar test satellite. Pulsar क्या होता है? It is a kind of star. एक न्यूट्रॉन स्टार है पल्सर. ये पल्सर क्या हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे है. सो इट डिटेक्ट्स, दिस सैटेलाइट डिटेक्ट द साइंस ऑफ पल्सर्स. ओके. नेक्स्ट टैनसैट, ऑल्सो कॉल्ड कार्बन सैट. ये क्या है? चाइनीज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है टू डिटेक्ट और डेडिकेटेड टू मॉनिटर कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेयर. इनफैक्ट चाइना इज द थर्ड कंट्री आफ्टर जापान एंड यूएस टू लॉन्च ए सैटेलाइट टू मॉनिटर ग्रीन हाउस गैसेस. जापान में एक सैटेलाइट है विच वॉज इन टू न्यूज लास्ट ईयर, किरामेकी. किरामेकी 2 इज जापान सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च्ड फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन. इट वॉज देयर फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट. देन यूएसए की बात करें, देर आर मेनी थिंग्स. इंपॉर्टेंट आर मिशन लूसी. मिशन लूसी इज टू एक्सप्लोर जुपिटर ट्रोजन्स. इट विल बी लॉन्च्ड इन 2021, नॉट एट लॉन्च्ड. Similarly, Europa Clipper, it also is not launched. It will be launched in 2020s onto Jupiter icy moon Europa. Europa is moon of Jupiter, वहां लॉन्च किया जाएगा. Then New Frontiers program क्या है? ये नासा का प्रोग्राम है. New Frontiers program, that means new different नया चीजों एक्सप्लोर करना. इसके अंदर 3 things which are being taken now till now. New Horizons, जो फ्लूटो पे है अभी, you know already we have seen it in space missions, and Juno, which has reached recently onto Jupiter, which also we have seen. And third is Osiris-Rex, which went to Bennu. It will come back in 2023. It's a sample return mission. So these 3 come under New Frontiers program, NASA का. These are not very important, just मैं वैसा कर रहा हूँ. Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, सोफिया, US and जर्मन मिलके किया है. Cyclone Global Navigation Satellite System, CGNSS, ये भी नासा का है. साइक, ये भी प्लान नासा का है. इट विल गो ऑन टू मेटालिक एस्ट्रॉयड 16 साइक. कोई इतना बड़ी इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सैटेलाइट, वे GOES-R था पहले नाम, अब नाम GOES 16 हो गया. वे भी नासा का सैटेलाइट है. कोई काम कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल लास्ट 4 आर यूजलेस, सिंपली फॉरगेट. ESA का एक इंपॉर्टेंट है लीसा पाथ फाइंडर. पहले इसको स्मार्ट 2 बोलता था, बट नो नीड टू रिमेंबर. लीसा पाथ फाइंडर क्या है? एक यूरोप का है. एक्चुअली दे आर प्लानिंग टू लॉन्च समथिंग कॉल्ड लीजा, एवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना. ये क्या है?
कोई जरूरत नहीं आपको समझने का डिटेल में। उसको लॉन्च करने के लिए जो टेक्नोलॉजी नीडेड एंड द पॉसिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ये लॉन्च किया है लीजा पाथफाइंडर। सो लीजा पाथफाइंडर विल टेस्ट टेक्नोलॉजीज नीडेड, इट विल टेस्ट द टेक्नोलॉजीज needed for the evolved laser interferometer space antenna ELISA, okay, which is a gravitational wave observatory which is planned to be launched in 2034. सो ELISA क्या है, ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, उसको लॉन्च करने का टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए लॉन्च किया है लीजा पाथफाइंडर। आर यू गेटिंग? दैट इज सफिशिएंट। ये इस पे है ना क्वेश्चंस डीप में नहीं आएगा आपको, सिर्फ इतना आएगा लीजा पाथफाइंडर क्या है, एक शिप है, एक सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय यूरोप टू टेस्ट द ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी दैट दे आर प्लानिंग इन फ्यूचर, ऐसा ऑप्शंस होता है। जस्ट ब्रॉड आइडिया होना चाहिए आपको, नो नीड टू नो मोर, बिकॉज हमारा थोड़ी है इतना डिटेल में समझने का। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लास्ट मिसलिनियस इज लेफ्ट। मिसलिनियस में हम देखेंगे फर्स्ट वी अंडरस्टैंड टेलीस्कोप्स एंड ऑब्जर्वेटरीज, देन वी अंडरस्टैंड सम अदर्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ऑब्जर्वेटरीज एंड टेलीस्कोप्स। फर्स्ट वन टू नो इज देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। What you need to know, it is a 3.6 meter telescope but no need to mug up. It is built by Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences along with a Belgian firm. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इतना परेशान मत हो जाइए इसको याद रखने के लिए, जस्ट इतना याद रखिए इट वाज बिल्ट बाय, याद रखने का मतलब जस्ट एक बार सुन लीजिए, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट along with Belgian firm। अगर ऐसा देता है completely it is built indigenously, no, optics built in collaboration with Belgian firm, that's why it was launched by Prime Minister as well as Belgian Prime Minister also. So it is largest reflecting telescope in Asia. It was launched where? It was placed in near Nainital in Devastal। बस बहुत काम है। ग्रेव्स 3 क्या है, ये वूटी में है, built by TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, and Japanese universities, 2 Japanese universities, no need to know the names. It study cosmic rays and it also has muon detector। muon का मतलब muon is nothing but a particle like electron, उसको डिटेक्ट करता है वे, बट आपको जरूरत नहीं, इतना पूछेगा ग्रेव्स क्या है, ग्रेव्स 3 क्या है, विच वॉज इन टू न्यूज रिसेंटली। क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन होंगे विच इज ए कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड यूके विच वॉज लॉन्च्ड इन इंडियन ओशन, ऐसा ऐसा अजीब के ऑप्शंस होंगे। आपको इतना पता होना चाहिए इट इज एन ऑब्जर्वेटरी इन वूटी, आपका काम हो गया एग्जाम में, नो नीड टू गो डीप इनटू दिस, ओके। जेम्स वेब क्या है, ये एक टेलीस्कोप है, किसका, जो नासा का। इट इज नॉट एट लॉन्च, इट विल बी लॉन्च इन 2018, इट इज प्लान्ड, इट इज ए टेलीस्कोप, बस इतना बताना चाहिए। बिकॉज ही यू सी इफ यू हैव नॉट इवन हर्ड द नेम देन देयर इज प्रॉब्लम, बट वी आर नॉट हियर टू गो डीप। इतना पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसक्राफ्ट। 1 कैशनी, यू नो कैशनी इज ए स्पेसक्राफ्ट, वहां 2 जेम्स वेब दे सकता है, यू शुड नो दैट इट इज नॉट ए स्पेसक्राफ्ट। और पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेलीस्कोप, you should know that James Webb is a telescope। बस इतना काम का है आपको, राइट। प्रीवियसली नोन एज नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, क्या लेना देना उससे। सो अगर कहीं बुक्स देखेंगे सब बोल्ड में लिखा होता है, आप परेशान मत हो जाइए, वे हमको कोई काम नहीं, क्यों याद रखना हमको। बट यस, जेम्स वेब भी नहीं सुना है मैंने, इसका मतलब आई एम नॉट फॉलोइंग व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द वर्ल्ड, आई शुड नो द नेम्स, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। देन ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम, नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम है, इसके अंडर 4 टेलीस्कोप्स आर देयर। 1 इज हबल टेलीस्कोप, दैट मीन्स यू रिमेंबर हबल इज आल्सो ए टेलीस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप, बहुत पुराना है एंड वेरी पॉपुलर। सो हबल नाम भी नहीं सुना तो प्रॉब्लम है। तो हबल क्या है, टेलीस्कोप, इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना। ये 1990 में लॉन्च किया है, 95 में लॉन्च किया, हमको क्या लेने देना है। इट ऑब्जर्व विजिबल लाइट, एक्स रेस, गामा रेस, हम क्या करेंगे। He is not going to this because पहले बात है वे इंडिया का नहीं है, दूसरा है वे नाम सुनने तक मेरा काम है, उसके बाद क्या करूं, ये स्टिल वर्किंग विच इज नॉट स्टिल वर्किंग, क्यों मैं क्यों पढ़ूं। डोंट टेक टेंस, जस्ट हबल एक टेलीस्कोप, आपका काम हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप आंसर कर पाएंगे। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, चंद्रा नाम सुन के लगता है कि इसरो ने या हम इंडियंस लॉन्च किया है, चंद्रा तो इंडियन है लेकिन उसकी नाम से नासा में काम करता था, तो इस यूएस ने लॉन्च किया है वे चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी 1998 में लॉन्च किया, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, इट इज आल्सो स्टिल वर्किंग।
वे एक्सरेस को ऑब्जर्व करता है। सिमिलरली कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, वे गामा रेस को ऑब्जर्व करता था, 91 में लॉन्च किया, 2000 तक काम किया, अभी काम नहीं करता है, इट इज नॉट ऑपरेशनल। सिमिलरली स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, ये भी एक टेलीस्कोप है, इट ऑब्जर्व्स इंफ्रारेड रेस बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वे 2003 में लॉन्च किया बट आई डोंट वांट इट एंड स्टिल वर्किंग, आई डोंट वांट इट। दीज फोर आर कॉल्ड ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम। मुझे इतना जानना जरूरी है, ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम नासा का है, इसके अंदर हबल, चंद्रा एक्सरे, कॉम्पटन गामा रे, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को बोलता था, बट काम खत्म। इस ये भी ज्यादा है मेरे लिए। Are you getting me? You need not know beyond it. Try to understand. Next, what is FAST? 500 मीटर अपर्चर सिंथेटिक टेलीस्कोप, ऐसा कुछ है, नो नीड टू नो इवन दैट। निकनेम इज तियानयान, सो ये चाइना का है, वे रिसेंटली लॉन्च किया है। इट इज लार्जेस्ट फील्ड अपर्चर इन द वर्ल्ड बिकॉज 500 मीटर डायमीटर, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग इट इज, and it is second largest after Ratan in Russia, which is 576 meter diameter, but it is not completely filled. ओवरऑल बात करें सो ये सेकंड लार्जेस्ट है, कंप्लीटली फील्ड की बात करें ये लार्जेस्ट है जो फास्ट, ये तियानयान, ये चाइना का है। बहुत बोल दिया, इतना डीप में जाना ही नहीं है, हम क्यों हर चीज इतना नोट नहीं करना। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, डोंट थिंक दैट आई एम स्किपिंग समथिंग, यू डू नॉट रिक्वायर। ये याद रखने के चक्कर में आप परेशान हो जाएंगे और जो मेन चीज हो जो एग्जाम में आने वाला है उसको कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं आपको। जस्ट सुन लिया ओके, देवस्थल में एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप लॉन्च किया है, ये बहुत बड़ा है, ये एशिया में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, ये हमने ऑप्टिक्स बिल्जियन फर्म के साथ मिलके बनाया है। एंड ऊटी में ग्रेव्स 3 ऑब्जर्वेटरी है हमारा, वे कॉस्मिक रेस एंड म्यून्स को डिटेक्ट करता है, एंड ये जापान के साथ मिलके टीआईएफआर ने बनाया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वे नासा लॉन्च करने वाला है। ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम के अंडर हबल, चंद्रा, कॉम्पटन, स्पिट्जर आता है, एंड 500 मीटर अपर्चर ये जो सिंथेटिक टेलीस्कोप और समथिंग, इट वाज लॉन्च्ड बाय चाइना रिसेंटली। इट इज लार्जेस्ट फील्ड इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज रतन इज लार्जेस्ट बट इट इज नॉट कंप्लीटली फील्ड। काम खत्म, ये भी बहुत ज्यादा। देन मिसलिनियस की बात करें, टीम इंडस क्या है, एक बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। इट हैज अनाउंस्ड दैट इट इज सेंडिंग ए स्पेसक्राफ्ट ऑन टू मून ऑन December 28, 2017 aboard an ISRO rocket. It has told, that's why it was into news. Then CubeSats क्या है, this is important. CubeSats are small inexpensive spacecrafts built in standardized, generally 4 to 5 inch cubed units में build करता है, so that you know any experiment base में students they want to send their satellites on an experimental basis, because it is small spacecraft, will not cost much, so you can do that. So एक kind of you know experiment के लिए easy रहेगा। Okay, so cash fall क्या है, again important. Recently ISRO has invented this. It is a kind of, इतना याद रखिए, flame proof coating. It is a water based, ready to coat and easy to use flame proof coating. So buses and cars में, vehicles में seats को वगैरह कोट करेंगे तो क्या होगा, in times of fire, so they will not get you know fire, ये flame proof है, so it will be protected. बस cash wall. Then UR Rao, not at all important. एक बंदा है बहुत पुराने टाइम से इसरो के साथ काम कर रहा है, दैट मीन्स विक्रम साराभाई बिगिनिंग में तुम्बा में यंग साइंटिस्ट को बुला के जो साइंटिफिक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो स्पेस प्रोग्राम, तब से वे बंदा एसोसिएटेड है, UR राव। इनफैक्ट ही वाज फॉर्मर चेयरमैन इसरो एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ही गॉट 2016 में IAF हॉल ऑफ फेम अवार्ड आया है इसको, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन टाइटेनियम स्पॉन्ज प्लांट, सो इसरो ने टाइटेनियम प्लांट इंडिजिनियसली स्टार्ट किया है केरला में, चवरा पे, इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। सो इट इज यूज्ड इन स्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशंस। हमारे पास बहुत टाइटेनियम रिजर्व्स है, स्टिल वी डोंट हैव दिस टेक्नोलॉजी, सो वी इंपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ नो नीड टू इंपोर्ट बिकॉज वी हैव डेवलप्ड आवर ओन प्लांट। देन स्पेस एंड क्लाइमेट के थ्रू इसरो एंड फ्रेंच का CNES मिलके एक सेमिनार किया है न्यू दिल्ली में। इसके अंदर सारे 60+ स्पेस एजेंसीज पार्टिसिपेट किया है। दे डिसाइडेड टू यूज ऑल देयर सैटेलाइट डेटा टुगेदर फॉर द टू कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर ग्रीन हाउस गैसेस। नॉट इंपॉर्टेंट, दीज 3 आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। ऐसा चीज एग्जाम में नहीं पूछता है, बट कैश फॉल पूछ सकता है। व्हाट इज कैश फॉल, ये फ्लेम रिटार्डेंट है। व्हाट इज क्यूबसैट, इनएक्सपेंसिव छोटा से स्पेसक्राफ्ट है। टीम इंडस एक प्राइवेट बेस्ड कंपनी बेस्ड ऑन बैंगलोर। काम खत्म। एंड फाइनली नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट बोलना मेरा ड्यूटी है इसलिए बोल रहा हूं, स्पेस एक्स क्या है,
maybe SpaceX you can keep in mind. SpaceX is a US based private space company, just like Team Indus in case of India. In fact, it is the first company to send, not sent, it is planning to send a spacecraft to ISS, International Space Station पे ये spacecraft भेजने वाला है. ये भी एक aerospace company है private US based. Team Indus is India based. This is not at all important. China recently एक फर्स्ट फुली ओन्ड ओवरसीज सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन लॉन्च किया है नियर नॉर्थ पोल, मींस स्वीडन में लॉन्च किया है. ये क्या करता है, इसके थ्रू डेटा डाउनलोडिंग ऑलमोस्ट ट्वाइस स्पीड से होता है. जब अभी हो रहा है उसकी ट्वाइस स्पीड से हो सकता है, विच इज फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू चाइना. बट हमको कोई लेना देना नहीं. ये क्या है समझने के लिए मेन वीडियो देख लीजिए, बट आई डोंट रिकमेंड, इट इज ऑल नॉनसेंस. सिमिलरली चाइना लॉन्च इज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व. ऐसा तो बहुत लॉन्च किया है. डार्क स्काई रिजर्व का मतलब जनरली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करता है. दैट मींस देयर विल बी नो लाइट पोल्यूशन, सराउंडिंग में कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं होगा, सो दैट कंप्लीटली इट कैन ऑब्जर्व द स्पेस. सो नियर इंडिया नेपाल बॉर्डर में लॉन्च किया है. ये कहीं नहीं पूछेगा कहां लॉन्च किया है, कौन सी कंट्री रिसेंटली डार्क स्काई रिजर्व लॉन्च किया है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा. दिस इज नॉनसेंस. ऐसा लगता है कि अगर मैं पूछूं आईपीएल में रिसेंटली एक बढ़िया सिक्स चक्का मारा कौन है ये बंदा, विच इज नॉनसेंस. बहुत लोग सिक्सर्स मारता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मीनिंगलेस है. तो ये चीजें जस्ट फॉर एक सेटिस्फैक्शन के लिए मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज वो एग्जाम में आता ही नहीं. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दी थिंग्स. गेटिंग मी? टेक इट लाइटली यार, डोंट टेक इट टू सीरियसली, बिकॉज यू डू नॉट रिक्वायर ऑल दिस. आपने सुनना है बस, काम खत्म हो जाएगा. बट जहां जरूरत है, लाइक इसरो का इंपॉर्टेंट गगन, IRNSS, सिमिलरली अगर बात करें PSLV C-37, वहां तो समझना पड़ेगा आपको. आर यू गेटिंग मी? हमारा है वे. यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज ऑल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो दिस इज द समरी ऑफ स्पेस.